रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? यख़रुजु मिन्हुमा लुअ्लुअ वल मरजान। निकलते हैं इन दोनों में से मोती और मूंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल अअलाम। और उसी के हैं जहाज भी जो ऊंचे खड़े होते हैं समंदर में पहाड़ों की तरह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। जो कुछ है इस जमीन पर उसको फना होना है और बाकी रहेगी जात तेरे रब की जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअनिन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मांगता है उसी से जो कोई है आसमानों में और ज़मीन में, हर रोज़ वो किसी काम में होता है। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? सनफ़ुरुगु लकुम अय्युहस्सक़लान। अन करीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ ए दो बोझल जमातों, जिन और इंसान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए गुरोहों, जिनों और इंसानों को अगर तुम्हें कुदरत हो के निकल जाओ तुम किनारों से आसमान और ज़मीन के तो निकल जाओ, नहीं निकल सकते तुम सिवाय जोर के। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। छोड़ दिए जाएंगे तुम पर शोले आग के और धुआं, तो फिर ना कर सकोगे तुम उनका मुकाबला। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान। फिर जब फट जाएगा आसमान तो हो जाएगा वो गुलाबी तेल की तलछीट की तरह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। तो उस रोज़ ना पूछा जाएगा उसके गुनाहों के बारे में किसी इंसान से और ना किसी जिन से। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। पहचाने जाएंगे मुजरिम अपने चेहरों से, फिर पकड़े जाएंगे पेशानी के बालों और पाँवों से। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? हाज़िही जहन्नमु अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून।
यही है वो जहन्नुम झुटलाया करते थे जिसे मुजरिम लोग यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन घूमते फिरेंगे वो दरमियान में उस दोज़ख के और खौलते हुए गर्म पानी के। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान और जो डरा खड़े होने से अपने रब के सामने उसके लिए दो जन्नतें हैं, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बहुत सी शाखों वाले दरख्त, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान इनमें दो चश्मे बह रहे होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इनमें हर तरह के फल दो किस्म के होंगे, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। मुत्तकिईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान तकिया लगाए हुए होंगे ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर रेशम के हैं और फल दोनों बागों के नज़दीक झुक रहे होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान होंगी उनमें शर्मीली निगाहों वालियां, ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान गोया वो हैं याकूत और मरजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान नहीं है जज़ा उम्दा नेकी की मगर ये बदला है आला दर्जे का। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान और इन दोनों के अलावा दो जन्नतें और हैं, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान दोनों गहरी सब्ज रंग की शादाब, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान नज़्ज़ाख़तान उन दोनों में हैं दो चश्मे उबलते हुए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान इन दोनों में हैं फल और खजूरें और अनार। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान इनमें होंगी नेक सीरत खूबसूरत औरतें। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे।
حور مقصورات في الخيام वो हूरें जो महफूज हैं खैमों में। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان तकिए लगाए बैठे होंगे मसनदों पर सब्ज रंग के और खूबसूरत नफीस। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहिब अजमत है और एहसान करने वाला है। صدق الله العظيم। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है, नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। बुरा समझून है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। बुरा समझून है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस और एसएसयू की जानिब से एक्सट्रीम गन शूटिंग कंपटीशन अरेंज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा कि इंटरनेशनल मयार का ये प्रोफेशनल शूटिंग कंपटीशन अरेंज किया जा रहा है, जिसमें तमाम यूनिफॉर्म फोर्सेस के लोगों को हमने इनविटेशन भेजी है, वो आए और अपनी शूटिंग स्किल्स को आजमाएं। इसमें हमने न सिर्फ ये कि यूनिफॉर्म पर्सन को इनवाइट किया है, बल्कि सिविलियन कैटेगरी भी रखी है और वुमेन की भी कैटेगरी रखी है। इसमें जिनके भी पास अपनी हैंड गन्स है वो इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। उसकी कुछ शराइत हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। तो मैं तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ कि इस इंटरनेशनल इवेंट It's 1 p.m. दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। एएसएफ फाउंडेशन के इस वक्त स्टॉल पे हम लोग मौजूद हैं और एएसएफ फाउंडेशन की जो हाउसिंग स्कीम है वो अगर M9 पे आप चले जाएं तो वन ऑफ द बेस्ट, जिस अंदाज से ये लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है। और उनकी टॉप मैनेजमेंट को इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है और उनकी टॉप मैनेजमेंट इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रिगेडियर अरफान अख्तर साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एएसएफ फाउंडेशन के, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे और आपका स्टॉल भी इस इम्पोर्टेंट वेन्यू पर मौजूद था, खासकर इस मुश्किल हालात में जिससे कौम गुजर रही है। आप भी साथ साथ खड़े हुए, कैसी फीलिंग रही आज यहाँ आने के बाद? सर थैंक यू वेरी मच, जाज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ज़ोहिर भाई का कि इन्होंने इस शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो आवाम के लिए जो एक सहूलत, एक वन विंडो ऑपरेशन एक छत के नीचे किया है, मेरे ख्याल में शायद ही रमज़ान के महीने में इससे अच्छी ऑफ़र, इससे अच्छी फैसिलिटी या इससे अच्छी सहूलत हमारी आवाम को मिल सकती है। एज रिगार्ड्स टू एएसएफ फाउंडेशन,
हमारी कोशिश है कि हम कराची की आवाम के लिए M9 के ऊपर जो कि हैदराबाद तक है, और ये फ्यूचर का एक ट्विन सिटीज़ बनने हैं, और हमारी कोशिश है कि ASF सिटी जो कि बिल्कुल मिड जंक्चर पे खड़ा है, और पिछले 5 साल में हमने काफ़ी कोशिश की है कि इसको डेवलप करें। डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो कि एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी को चाहिए होती हैं वो इसके अंदर लेके आएँ, और इंशाल्लाह एक ये मॉडर्न सिटी है, एक स्मार्ट सिटी है, जिसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ भी मिलेंगी, कॉलेजेस भी मिलेंगे, हंटिंग ग्राउंड भी मिलेंगे, पैराग्लाइडिंग भी मिलेगी, शूटिंग रेंज भी मिलेंगे, और इसके अलावा अपनी आवाम के लिए वो तमाम सहूलतें होंगी कि जो किसी बच्चे से लेके बूढ़े तक वहाँ पे दस्तयाब होंगी। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो हमारे ASF सिटी में आके इन्वेस्टमेंट भी करें, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी करें। और ईद के बाद हम वैसे भी शटल सर्विस शुरू की हुई है, वो ईद के बाद होगी, वो आके ऑन ग्राउंड देखें हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क को, और जो जिसकी अपनी बसात है, इस्तात है, उसके मुताबिक वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 80 गज से लेके हमारे पास 2 कनाल तक के प्लाट मौजूद हैं, और इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह हम शुरू में जून तक और दिसंबर तक हम लॉन्चिंग भी करने जा रहे हैं, और पोजीशन भी होगी, और इसके अलावा हमारी वहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड वो ऐसे हैं जो कि किसी भी मॉडर्न और स्मार्ट सिटी के लिए हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेड साहब, वैसे भी ऑलरेडी हमने देखा कि रेट्स बहुत अच्छे हैं, और जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ASF स्कीम में वो भी बहुत लाजवाब है, लेकिन आप बचत एक्सपो में आए तो यहाँ लोगों को यहाँ से भी कोई बचत हो रही है? सर बिल्कुल, हमने फ्लैट रेट पे 10% डिस्काउंट पे रखा हुआ है कि अगर कोई भी आपका प्लाट हमारा अगर कोई फ्लैट रेट पे लेना चाह रहा है तो 10% डिस्काउंट है, और स्पेशली ये जोहर भाई ने भी रिक्वेस्ट की थी, और उसके लिए कोई भी बुकिंग करवा सकता है। घर पे जाके अपनी सोच रखें, मशवरा करें अपनी फैमिली से, और उसके बाद वो कल आ जाएं, परसों आ जाएं, हफ्ते बाद हमारे पास आएँ। हम इंशाल्लाह उनके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो 10% डिस्काउंट है ये पूरे रमज़ान चलेगा। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के अपने एफर्ट कैसे लगे आवाम की सहूलत के लिए? सर मेरे ख्याल में तो इससे अच्छे, कंड्यूसिव और इससे बेहतर इन्वायरमेंट शायद ही आपको पूरे कराची में कहीं मिल सकेंगे। एक छत के नीचे आपके के सारे ब्रांड मौजूद हैं, 35% आपका डिस्काउंट है। मेरे ख्याल में जो भी बच्चा मैंने यहाँ पे देखा है, बूढ़ा देखा है, अपनी बहन देखी है, अपना भाई देखा है, किसी का हाथ खाली नहीं जा रहा। तो वो अंदर यहाँ पे आके शॉपिंग के लिए तो आए रहे हैं, कुछ लोग खाली हाथ भी आए थे कि शायद विंडो शॉपिंग करेंगे, और वापसी पे जोहर भाई ने बताया कि यहाँ पे ATM की सहूलत मौजूद है, कोई किसी से उधार ले रहा है, कोई किसी को कह रहा है कि मुझे इजी पैसा कर दें, यानी यहाँ पे जो भी आ रहा है वो अपने बैग भर के और खुशी खुशी वापस जा रहा है। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें आपको किसी से मांगने की, किसी लाइन में खड़ा होने की जरूरत है नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में जहाँ पे आपकी लाइन भी नहीं लग रही, और एक छत में जहाँ के AC के एनवायरनमेंट्स हैं, वहाँ पे हर एक को इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में आपको कोई चीज़ मिल रही है, मेरे ख्याल में इससे अच्छा सोल्यूशन, इससे अच्छी बचत, और इससे ज़्यादा जो हमारे वाइट कॉलर लोग हैं उनके लिए इससे बेहतर एनवायरनमेंट शॉपिंग का कोई नहीं हो सकता। ब्रिगेड साहब के लिए अपना विजिट भी कैसा रहा, और खासकर पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको खुद कितनी हुई ASF स्कीम को इस बचत एक्सपो में लाने के बाद, जहां लोगों के चेहरों पे खुशियां दिखाई दे रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एज रिगार्ड्स के जहाँ तक हमारा स्टॉल है वो तो ज़रा हर बंदे ने अपने इस्तात के मुताबिक, अपने उसकी सोच के मुताबिक, अपनी फैमिली के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी है। बट ओवरऑल जो इन्वायरमेंट्स बचत एक्सपो ने दिए हैं या बदर एक्सपो ने दिए हैं, मेरे ख्याल में इससे बेहतर इन्वायरमेंट्स आपको कराची शहर के अंदर किसी भी जगह पे नहीं मिल सकते। और अभी आप देख लें इस वक्त रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है, और कितना अच्छा जो है ना आपका माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स टू जोहर भाई, थैंक्स टू बदर एक्सपो, और थैंक्स टू कराची की एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने, स्पेशली गवर्नर साहब हैं। It's 1 PM. कि इस इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लें और अपनी महारत को साबित करें, और इसमें हमने कुछ प्राइसेस रखे हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स रखे हैं जो कि लोगों के लिए इंकरेजमेंट का बायस बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU आप लोगों के लिए ला रहा है फर्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंड गन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि 9 सितंबर को SSU हेडक्वार्टर चौकंडी में खेला जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म SSU की वेबसाइट पर दस्तियाब है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 सितंबर है। इस शूटिंग कंपटीशन में शिरकत के लिए ज़रूरी है कि शूटर के पास जो फायर आर्म है वो लाइसेंस्ड हो,
उसके पास उसके सेफ्टी गैजेट्स कंप्लीट हों, आई प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन। शूटिंग गैजेट्स में ज़रूरी है हैंडगन, हैंड होस्टर, 3 मैगज़ीन और मैगज़ीन पाउचेस। इस शूटिंग कंपटीशन में 6 डायनामिक स्टेजेस खेले जाएंगे जिनमें 150 राउंड फायर किया जाएगा। ये एक रोज़ा शूटिंग कंपटीशन होगा। इसमें 3 के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, सिविलियन एंड फीमेल कैटेगरी। जितने भी यूनिफॉर्म पर्सन होंगे वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट कैटेगरी में खेलेंगे, जितने भी सिविलियन मेल पर्सन होंगे वो तमाम सिविलियन कैटेगरी में खेलेंगे, और ख़वातीन चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट से हों या सिविल हों वो फीमेल कैटेगरी में हिस्सा लेंगी। ये कंपटीशन ओनली 9mm पिस्टल कंपटीशन होगा और ये IPSC और USAPSA के रूल्स के तहत खेला जाएगा। इस मैच में इस्तेमाल होने वाला टारगेट USAPSA का स्टैंडर्ड टारगेट है जिसके 3 जोन हैं, अल्फ़ा, चार्ली एंड डेल्टा। तीनों कैटेगरी के विनर्स को कैश प्राइज, मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस सुहेल एंड आई वर्क एज अ बिजनेस डेवलपर एट बाउंडलेस टेक्नोलॉजीज़। एंड जो हमारा मेन कोर है इस कंपनी का वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में हम बहुत सी प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं जैसे वर्डप्रेस, शॉपिफाई, मैजेंटो, ई-कॉमर्स। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में हमारा पूरा पैकेज है जिसमें एवरीथिंग इंक्लूड सोशल मीडिया, लिंक्डइन मार्केटिंग, एवरीथिंग एक्सेट्रा। उसके अलावा डोमेन एंड होस्टिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 2D एनिमेशन पे भी काम करते हैं। तो तकरीबन हमें 22 साल हो गए इस फील्ड में, और इस एग्जीबिशन में ये हमारी 3rd एग्जीबिशन है जिसमें हमने अपना स्टॉल लगाया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे काम करने में। एंड बदर एक्सपो को मैं बड़ा थैंक यू कहूँगा इस बारे में क्योंकि उन्होंने काफ़ी हेल्प करी एंड दे वर रियली नाइस। एंड जो भी ऑर्गेनाइज करा वो बड़ा बेहतरीन करा था यहाँ पे। मेरा नाम इमरान मुश्ताक है। आई एम दी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट फॉर गोल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। मेरा बेसिकली यहाँ आने का मकसद ये था कि जो पेपर इंडस्ट्री का जो यहाँ पे एक्सपो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ पे मैं आके देखूँ कि कौन सी कंपनीज़ यहाँ पे हैं और क्या वो ऑफ़र कर रही हैं। और मेरे लिए बड़ा एक प्लीजिंग सरप्राइज़ है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया होगा, इतने यहाँ पे विजिटर्स आए होंगे इस इंडस्ट्री को या इस एक्सपो को देखने के लिए। मुझे जो मेरा टेक अवे यहाँ पे वो ये है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे नए सप्लायर्स जो है वो मैंने यहाँ मिला हूँ आज उनसे, और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े बड़े सप्लायर्स आए हैं। और ये तो एक जनरल बात मैंने कर ली। अगर मैं कंट्री लेवल पे बात करूँ तो आई थिंक कि आपका एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। आप लोग मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मेरी तरफ से और जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करके इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और अगले साल में फिर आऊँगा इंशाल्लाह, और जितने भी आपके एग्जीबिशंस हो रहे हैं मैं इंतज़ार करूँगा कि आपकी तरफ से हमें दावत मौसूल हो, और हम डेफिनेटली ख़ुद भी आएंगे, अपनी टीम्स को भी भेजेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Khushal Ahmed Bhatt. I am CEO of Graphic Digital Solution. We are distributor Kodak for Pakistan. We are dealing in Kodak CTP and thermal CTP plates. सबसे पहले तो मैं बदर एक्सपो का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और पेप गाई का जिन्होंने ये इवेंट किया जिसमें हमें भी मौका मिला कि अपने प्रोडक्ट को शो करें।
जैसे कि यहाँ की मार्केट है पाकिस्तान की, कोरोना के बाद काफ़ी हालात ख़राब थे, प्रॉब्लम में थे। जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसमें प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद इस शो के होने के बाद उम्मीद है कि एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा पाकिस्तान एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, और पेप गाई ने ये बड़ा अच्छा सेटअप लिया है जिसके हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त मार्केट में बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस जाएगा प्रिंटिंग इंडस्ट्री का। इस वक्त बड़े बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोडेक के CTP डील करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आप पैकेजेस का नाम मतलब साइमा पैकेजिंग है, मेरिट पैकेजिंग है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वेंटेज प्रिंटर है, यकीन आर्ट प्रेस है, तो ये सब लोग एक हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो ये कोडेक CTP आप देख रहे हैं, इसका मकसद ये है कि ये एक एक्सपोजिंग यूनिट होता है, तो ये कोडेक की जो आपकी प्रिंटिंग हो इसको बड़ी अच्छी क्वालिटी देता है। स्पॉट टेक्नोलॉजी हम स्पॉट्स टेक्नोलॉजी हम इसको करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसको हम डील कर रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा रिज़ल्ट है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, न्यूज़पेपर में, सब जगह पर अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूँगा फिर बदर एक्सपो का, उसने अच्छा मैनेज किया हुआ है, और पेप गाई ने ये डिसीजन लेकर बड़ा अच्छा वो किया ताकि हमें एक पाकिस्तान में प्रिंटिंग इंडस्ट्री को बड़ा अच्छा मौका मिला है अपने प्रोडक्ट को पार्टिसिपेट करने का। Assalamu alaikum, I am Mohammad Owais and we are representing CPP Services Private Limited here along with our principal UP Group Shanghai. UP Group basically पहले मैं आपको बता दूं CPP Services के हवाले से we are the manufacturer of printing and graphics products. हम लेबल्स बनाते हैं और हम पेपर बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साथ साथ रिजिड बॉक्सेस की। प्रिंटिंग के साथ साथ हमारा जो एक सेक्शन है ट्रेडिंग का, जिसके अंदर हम स्टिकर की ट्रेडिंग करते हैं। रॉ फॉर्म के अंदर जो शीट फॉर्म और रोल फॉर्म के अंदर स्टिकर होता है उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा हम मशीनरी की ट्रेडिंग करते हैं, जो प्री प्रेस, प्रेस और आफ्टर प्रेस की मशीनरीज के जो हमारी प्रेस लाइन के लिए ज़रूरत होती है उन सब में हम डील करते हैं। और पाकिस्तान में पहली मरतबा यूपी ग्रुप को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया पिछले 5 साल पहले प्रिंट पार्क एग्जीबिशन में ही, और आज ये इनका 4th विज़िट है उस एग्जीबिशन के बाद, जो हमें एक ओवरवेल्ड हमें एक रिस्पांस मिला हमारी प्रेस लाइन की तरफ से ही और प्रिंट पार्क के एक्सपोजर की वजह से, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग रहा है। Assalamu alaikum. My name is Nasir. I am from Ehtisham Packages. हमने प्रिंट पार्क 2022 में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। We had a wonderful time here. The management is excellent. Congrats to Pep Guy team. They made the show very successful. And as an exhibitor, as a participant in this show, it has been a great success and we are quite satisfied with their performance and everything. Thank you Pep Guy, thank you Badar Expo. मेरा नाम महमूद इकबाल रहमानी है। मैं डायरेक्टर मार्केटिंग आर्टोटेक प्राइवेट लिमिटेड से बिलोंग करता हूँ और हमारा काम जो है ऑफसेट प्रिंटिंग और कॉरुगेशन का है। और इस साल जो है हम लोगों ने 2023 के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्लेक्सो प्रिंटिंग। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2022 में इंशाल्लाह हमारे पास फ्लेक्सो मशीन आ रही है, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें और मुतारिफ कर सकेंगे पाकिस्तानी मार्केट में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह जब वो आ जाएगी तो फिर हम लोग उसमें और ज़्यादा मज़ीद आपको बता सकेंगे। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही ये प्रिंट टू पैक जो है एक्सपो। इसमें माशाल्लाह जो है काफ़ी अच्छा हमारे पास रिस्पॉन्स आया और इस तरीके की एग्जीबिशन जो है तकरीबन हर साल होनी चाहिए, और ताकि लोग अपनी नई नई चीज़ें, जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है, नए सेटअप्स आ रहे हैं, मशीनरीज जो आ रही हैं, लोग लगा रहे हैं जो, तो वो अपनी मुतारिफ करा सकें, लोगों को नए ऑप्शंस दे सकें।
मेरा नाम मोहम्मद आरिफ ख़ान है। मैं PPCL में एज ए प्री प्रेस मैनेजर काम करता हूँ और PPCL जो है 1954 से पाकिस्तान में हेल्डबग को रिप्रेजेंट कर रही है और PPCL की जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान में प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए वो हम हेल्डबग के प्लेटफॉर्म से जो है अंजाम दे रहे हैं 1954 से। प्रिंटिंग इंडस्ट्री को हम अपनी इक्विपमेंट, प्रिंटिंग मशीन्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसेंटली हमने जो है ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू किए हैं ताकि पाकिस्तान की प्रिंटिंग इंडस्ट्री को उससे कुछ फ़ायदा पहुंच सके। तो इस सिलसिले में हम कुछ वन डे वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं ताकि हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो लोग प्रेस की ऑपरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, प्री प्रेस के ऑपरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम उनको कुछ ट्रेनिंग सेशन जो है वो प्रोवाइड करें और उनकी नॉलेज में इजाफा करें। पापगई का बहुत बहुत शुक्रिया। पापगई का ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जिससे तमाम इस इंडस्ट्री के काम करने वालों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे वो अपने बिज़नेस को भी प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, प्रिंटिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। बदर एक्सपो हमेशा हर साल की तरह इस साल भी बेहतरीन इवेंट जो है वो मैनेज किया है बदर एक्सपो ने। बदर एक्सपो का बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा पापगई को इवेंट मैनेज करने में और बदर एक्सपो हमेशा जो है बेहतरीन तरीके से अपना काम ये अंजाम देता है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा बदर एक्सपो की टीम का भी कि वो हमेशा जो है वो इस शो को जो है वो मैनेज करते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा शो है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का आज का दिन बिज़ी रहा है तो आने वाला कल का नेक्स्ट संडे जो है वो इससे भी ज़्यादा बिज़ी होगा। दुश्मन को पछाड़ने की सलाहियत रखते हैं, वो कोई और नहीं है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नन अदर देन छोटा विकी। अच्छा, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको फेस करते में आपकी काम पे टांग जाती हैं? आपने कभी खुद खेली? मैं खेलता हूँ क्रिकेट बहुत अच्छी और मैं अपने मेरा जो बचपन गुजरा है, आप बचपन मतलब 5 साल पुराना 7 साल पुराना जो टाइम गुजरा है इसमें प्रॉपर मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ नादरा मुश्ताक और आप देख रहे हैं KTPL क्रिकेट हंगामा। हमारे साथ आज बहुत 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 ज़बरदस्त नहीं बल्कि दबंग किस्म की पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में। पहली पर्सनालिटी का तारुफ करवाने जा रही हूँ जो कि हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप तकरीबन रोज़ जब इनका मैच होता है ये बड़े स्ट्रेस में नज़र आते हैं। पहली इनिंग में तो इनके चेहरे पे अजीब सी घबराहट होती है, लेकिन जब इनकी टीम दबंग अंदाज से खेलती है तो ये मुस्कुराते भी हैं, खुश भी होते हैं, बकअप भी करते हैं और फिर बाद में सेलिब्रेशन भी होता है टीम का। नन अदर देन दानिश खान साहब जो कि हैं DHA दबंग के फ्रेंचाइज ओनर। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ दूसरी पर्सनालिटी जिनको आप देखते हैं वही बात कि फर्स्ट इनिंग में इनके छक्के चौके तो नहीं लगते, लेकिन सेकंड इनिंग में ये भरपूर फॉर्म में आते हैं और फिर जिस तरह से अटैक करते हैं और दुश्मन को पछाड़ने की सलाहियत रखते हैं, वो कोई और नहीं है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नन अदर देन छोटा विकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले दानिश साहब, DHA दबंग, ये दबंग कैसे हो गया? मैं आपको पहले तो क्लियर ये बताऊं, माशाल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करने का काम है कि हम फाइनली सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और जो कि आपको पता है ये एक ज़बरदस्त किस्म का मैच है। और मैं सबसे पहले KPTL जोए नसीर बदर एक्सपो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि देखें उसने एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसी लीग बना के सबके सामने खड़ी कर दी है जिसका मेरे ख्याल से अगर कोई फ़ायदा ना उठाए ना तो मैं कहता हूँ वो इस टाइम वो अपने लिए नुकसान करेगा। आई थिंक सो ना। तो मेरे ख्याल से ये हम सबके लिए ज़बरदस्त किस्म की लीग है और ज़बरदस्त लीग के हिसाब से एक ज़बरदस्त टीम है जो DHA दबंग है, जो आपके सामने परफॉर्म कर रही है। मेरे ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स जो आए हुए हैं वो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं और अल्लाह मियाँ बस नजर बचते बचाए और इसी तरह इनको परफॉर्म कराते रहे और इंशाल्लाह हम फाइनल विन करें। अच्छा, ये बताएं कि
इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है इस दफ़ा सभी को, तमाम टीम्स को, तो आप इसके बारे में पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि आपकी जो डीएचए दबंग है वो क्लिक कर जाएगी एकदम से, या फिर अगर ये दबंग नाम साथ में जुड़ा होता और टीम की परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर आप कैसा सोचते हैं? देखें मसला, आई थिंक मेरे ख्याल से मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि हम एज अ एवन मैनेजमेंट एक कंपनी है, एज अ डीके एवन मैनेजमेंट कंपनी, 15 साल से मैं ये सब चीज़ें लाइफ के अंदर फेस कर रहा हूँ। हमारा काम ही एज अ मैनेजमेंट है, तो अगर हम कोई चीज़ मैनेज नहीं करते तो आई थिंक फिर हम फेलियर अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। बट देखें, कोई भी चीज़ एकदम आती है और आप इसको ऐसा ना समझे कि आते ही आपकी चीज़ हिट हो जाती है। नो, फर्स्ट टाइम हमें पता ही नहीं था कि टेप बॉल क्या है, आई स्वेयर नहीं पता था। तो जब हम क्रिकेट में जब घुसे, आप जब अपना एक्सपीरियंस बैट करते हो ना, मेरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप हारने के बाद विन करते हो, ठीक है, जब आप हारते हो तो यकीनन उससे कुछ सीखते हो। तो हमने लास्ट टाइम बहुत छोटी परफॉर्मेंस की और मेरे ख्याल से आई थिंक सो एक आध मैच जीतने के बाद ही हम क्विट कर गए थे जी। और मैं वही आपसे एक बार बात कर रहा था कि मैं ये कहता हूँ कि ये सबके करियर का एक सवाल है, जो प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं, खेल रहे हैं, जो माशाल्लाह अब उतर के आ चुके हैं प्लेयर हमारे पास टीम में। मैं नहीं समझता जिस तरह परफॉर्मेंस की आप लोगों के सामने है, ये परफॉर्मेंस अच्छे प्लेयर के साथ ही हो सकती थी और प्रोफेशनल प्लेयर के साथ ही हो सकती थी, क्योंकि इस टीम के अंदर सबने अपनी अपनी टीमों के अंदर प्रोफेशनल प्लेयर उतारे हुए, प्रोफेशनल बॉलर उतारे हुए, उसी किरदार की वजह से टीमें आगे बढ़ रही हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, पूरी टीम ने एक जैलिंग होकर काम किया, जैल हुई हुई टीम परफॉर्म कर रही है। पहला मैच आपको पता है अनफॉर्चुनेटली हम जो हारे, उसकी वजह क्या थी? पिछली टीमें 3 मैच खेल चुकी थी, वो खेल चुकी थी, उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का एक एनवायरनमेंट था। हमारे लोग फ्रेश उतरे थे, कुछ फ्लाइट करके डायरेक्ट आए थे, डायरेक्ट मैच खेलना शुरू कर दिया था। उनके लिए आई थिंक सो एक नई बॉल, एक नया ग्राउंड, एक नई पिच, नया एनवायरनमेंट के साथ खेलने में आई थिंक सो शायद हमें प्रॉब्लम हुई, बट हम उसको फिर एंड के अंदर विन टू विन सेकंड, थर्ड, फोर, और आप सेमीफाइनल में आज हम आपके सामने। सेमीफाइनल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा दानिश साहब, ये बताएं कि आपके जो टीम का नाम है डीएचए दबंग्स, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट एंड व्हाई यू हैव चोजन दिस नेम? देखिए, बेसिकली जब जोहर भाई ने ये डिस्कस हमसे किया कि ये 8 टीमें हैं और इन एरियाज़ की और ये नाम है, तो बेसिकली वो जो डीएचए है ना, एक अट्रैक्शन, आपको पता है जो दबंग, एक दबंग स्लोगन है ना, वो वैसी एक दबंग है। अच्छा, ये चीज़ें जो चैलेंजेस है, मैंने आपको बताया था, इवन मैनेजर मैं लेता हूँ चैलेंजेस, कि बगैर चैलेंज के कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो चैलेंज लेना मेरी शुरू से एक आदत है। लोग कहते हैं ना यार, किसी चीज़ में पंगा लेना हो तो वो एक आदत होती है, ये चैलेंज लेना मुझे। तो वो एक इतना खूबसूरत वर्ड मुझे डीएचए, और बहुत सारे नाम भी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे डीएचए दबंग ये स्लोगन बहुत ज़बरदस्त लगा। और इसको मैंने फिर हमने इसको बोला हम इसको ओन करते हैं और हम इसको लेके टीम को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर नाज़रीन आपको एक बहुत अच्छी मज़े की बात बताऊं कि डीएचए दबंग का वैसे तो सभी टीमों ने अपने अपने सॉन्ग्स बनाए हैं, डीएचए दबंग ने स्पेशली एक ऐसे सिंगर से ये सॉन्ग गवाया है कि आप यकीनी तौर पे जब भी सुनेंगे झूम झूम उठेंगे, और वो हैं अली ज़फ़र। एक बहुत बड़ा नाम आप लेकर आए, डीएचए ने जो सॉन्ग बनवाया है, मेरे ख्याल से इसकी इतनी हाइप है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू में अली ज़फ़र से गवाए थे गाने और बहुत अच्छी उन्होंने सिंगिंग की थी, लेकिन वो मुकाबला कोई भी नहीं कर सका। और सेम डीएचए ने भी ये रीत डाल दी है कि अली ज़फ़र जो हैं वो बेस्ट सिंगर के तौर पर इस वक्त डीएचए के साथ है। मैं इसमें मैडम यही कहूँगा कि मैं अली ज़फ़र का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त, भाई, सब कुछ है और मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। आपको पता है इंटरनेशनली नेम है, और वो इतना खूबसूरत आर्टिस्ट भी है, अदाकार भी है, और अल्लाह मियाँ उसको नजर बच से बचाए। अली, अब मैं लाइव बोल रहा हूँ अली भाई को। और अली भाई की एक सबसे खूबसूरत बात ये कि जब मेरी इनसे बात हुई कि मैंने बोला यार ये इस तरह हम लोग इनिशिएट ले रहे हैं KPTL का और ये गाना है, मैंने एक टीम ली है उसके अंदर, तो उन्होंने मुझे तीसरी बात दी कि उससे कहा एक काम करो, तुम अपनी टीम का नाम मुझे भेजो। और यकीन मानो उन्होंने रात को मुझे सरप्राइज़ दिया, 2 बजे कॉल मुझे आती है और कहते हैं यार ये मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, ज़रा चेक करो। वो मैंने दिया तो वो एक दबंग का एक स्लोगन आया हुआ था टाइटल में ना, सुना मैंने, कहा आप जो बना रहे हैं अच्छा बना रहे हैं, आप इसको करें, कैरी ऑन। तो आप यकीन माने 3 दिन में उन्होंने मुझे गाना ज़बरदस्त करके बनाया। फिर 5-7 दिन मास्टर एंड मिक्सिंग के लिए US भेजा, जिसमें वो ट्रांस पीछे बजा हुआ है सारा, वो मास्टर होके US से आया। तो मैं अगेन अली का शुक्रिया अदा करूंगा कि इसने मुझे डीएचए दबंग का एक गाना ही नहीं बल्कि टीम को एक खूबसूरत एक जैलिंग, एक सपोर्टिंग करने के लिए अपना एक इमेज स्ट्रक्चर हमें भेजा है, जिसको हम ज़रूर मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच अली ज़फ़र, थैंक यू। इसमें कोई शक नहीं है कि गाना बहुत बहुत ज़बरदस्त है, और स्पेशली जब ग्राउंड के अंदर ऐसी सॉन्ग की तलाश होती है जिससे जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके अंदर एक रूह फूंक जाए
और सब जो है इंजॉय करें और साथ में एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट हो जाए, तो वो चीज़ अली जफ़र के सॉन्ग में है। आप देखें कि पीएसएल के गाना बजता है, एक ग्राउंड के अंदर हो स्टार्ट होता है और सारी क्राउड जो है एक जोश जज्बा जो है ना आपको निकल के सामने आता है। मैं कहता हूँ देखें जितने भी गाने आए आई थिंक सो सब अच्छे होंगे, लेकिन जब तक उसकी एक आवाज़ अली जफर की ग्राउंड में नहीं आती ना तो मैं कहता हूँ मैदान सजता नहीं है। पावरफुल आवाज़ है और खूबसूरती उसकी शायरी, उसके लिरिक्स, उसका पीछे म्यूजिक, साउंड अरेंजमेंट्स, ये बहुत बड़ी ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और ये अली जफर पे जाके बिल्कुल मैं कहता हूँ आई थिंक सो के बैठता है। हम दिलों के अंदर उसकी आवाज़ गूंजती है, बैठती है। हमें अच्छा लगा तो हमने उसी को अरेंज किया और उसी से बात की। हमारा नसीब था कि अली ने बोला कि ठीक है मैं इसको सॉन्ग को गाऊंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा सेमीफाइनल की तरफ, क्योंकि अब सेमीफाइनल खेलने आप जा रहे हैं। क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी उसके लिए? क्या अप्रोच रखेंगे? डिफेंसिव होंगे या बहुत ज़्यादा अटैकिंग होंगे? किस तरह से खेलना चाहेंगे? मैं सिंपली एक बात अपनी टीम के लिए करूंगा, जो कि हमारी लास्ट नाइट भी हमारी मीटिंग एक प्रॉपर सारे अपने सीनियर प्लेयर्स से सबसे हुई है, हमारी अदर कैप्टन भी, विक्की से भी, उमर भाई से भी, अच्छी से भी, जेबी से भी, ओवरऑल बॉलर से भी, सबसे हमारी एक प्रॉपर मीटिंग हुई है लास्ट हमारी। तो इनका सबका किरदार खाली सिंपली ये है कि हम जिस टाइम ग्राउंड में उतरेंगे हमारा सिर्फ एक मकसद होगा कि हमने जीत को हासिल करने के लिए एक एफर्ट करनी है। मैंने कहा वो आप लोगों ने करनी है, उसके बाद जीत हमारा मुकद्दर बनती है नहीं बनती है इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। अल्लाह मालिक है, जो टीम अच्छा करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी वो विन करेगी, इसमें कोई अलग बात नहीं है। हम देखें यही परफॉर्मेंस करते आए लड़के और जो करते हुए आ रहे हैं वो मैं नहीं देख रहा, आप लाइव उसके अंदर दिखा रहे होते हो, वो शॉर्ट प्ले टू प्ले, क्लिक टू क्लिक हमें नज़र आ रहा होता है ऑन एयर। अच्छा करेंगे तो वो रिजल्ट उनको खुद भी देखने को अच्छा लगेगा और उनके बोलने वाले भी, उनके चाहने वाले भी उनको अच्छा ही कहेंगे। कोई माइंड में है आपके कोई ऐसा प्लेयर जो कि आपकी टीम के लिए कोई डेंजरस साबित हो जाए? देखिए मैं समझता हूँ, मैं जिसको डेंजरस समझता था मैं समझता था तैमूर को, ठीक है, लेकिन जिस तरह शानी ने और हमारे बॉलर उन्होंने पकड़ा है टीम प्रेशर, क्योंकि ये लोग जानते हैं, डेली खेलते हैं ये लोग साथ, इन्होंने ये अच्छी तरह जानते हैं उसको बॉलिंग कहाँ करनी है, किधर करानी है बॉल तो क्या होगा। वो बहुत अच्छा प्लेयर है बट इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा उसको रोक के रखा। हम समझ रहे थे वो हमारे खिलाफ भी शायद बहुत अच्छे नंबर बना देगा, रन बना देगा, बट लड़कों ने रोक के रखा। सेकंड इनिंग के अंदर उसको बहुत जल्दी तीसरी बॉल चौथी बॉल पे आई थिंक सो कैच उठा दिया, उससे आउट हो गया। फर्स्ट में वो टिका रहा बट वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका जिस तरह वो और टीमों को मार रहा था वो। तो मैं अपनी टीम को कांग्रेच कहूँगा कि वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। आई थिंक मैं समझता हूँ इन्होंने इस चीज़ को पिक कर लिया है और इंशाल्लाह मजीद सारी चीज़ें, और छक्के चौके सबको पड़ते, जाहिर है कोई अगर ग्राउंड में उतरा है और खेलने के लिए आया है तो वो यकीनन खेलने ही आया है वो। तो ये सब चीज़ें जो चलती हैं छक्के चौके, बट जो अच्छा खेलेगा मैंने कहा ना सेकेंड वो उसके रिजल्ट उसके सामने होंगे। अच्छा दानिश साहब ये बताएं कि आपके जो केटीपीएल नेक्स्ट सीजन है उसको आप कहाँ पर देखते हैं? कोई और शहर तो नहीं चुना हुआ कि नहीं अब कराची से मूव करके लेके जाना है कहीं और? क्योंकि इस केटीपीएल की बहुत बहुत ज़्यादा धूम है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान के डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, जो हमारे फ्रेंड्स भी रहते हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि ये केटीपीएल अब मूव करे, शहरों में जाए, जैसे पीएसएल को लेकर जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं समझता हूँ ये जोहेर का अपना विजन है, केपीटीएल एज उसका बेबी है ये, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने एज अ फ्रेंचाइज उसके अंदर एक एफर्ट मेहनत ज़रूर की है, बट ये उसका बेबी है, उसको पता है कि उसका टारगेट मार्केट क्या है। वो जिस तरह इस चीज़ को लेके चल रहा है, फर्स्ट ओपिनियन फर्स्ट एडिशन आपके सामने था, हम बारिश की नज़र ज़रूर हुए, बट उसने फेजेस को दिन में, शाम में, दोपहर में मैच करके उसने प्रॉपर उसको वे में उसी स्ट्रक्चर करके निकाल दिए। बट देखें इस दफ़ा भी हमें बारिश मिली, लेकिन उसने क्या किया है, सबको पॉइंट दिए और बड़ी खूबसूरती के साथ आज तक मैच चलना है शुरू में, और आप सेमीफाइनल एंड कल फाइनल है, तो ये उसको पता है। और केपीटीएल देखें दुनिया में जिस तरह देखी जा रही है ना, दुनिया में जिस कंट्रीज में जिस मुल्क में देखी जा रही है, उन सबको पता है एक बहुत खूबसूरत सैटेलाइट लोगों को मिला हुआ है जिसकी बदौलत वो घर बैठ के देख सकते हैं। जिस तरह मेरी छोटी बहन ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई है, यूएस बैठी हुई है, सब बैठे हैं, वो देख रहे हैं बाकायदा मैच, और डेली मुझे ग्रुप के अंदर चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये गुड साइन है कि एक अच्छी क्रिकेट लोगों को घर बैठ के देखने को मिल रही है, और वो भी टेप बॉल, स्ट्रक्चर्ड टेप बॉल। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। अब इसकी अचीवमेंट देखें, ये घरों पे देखने को मिल गई है, तो इसका समझ लें कि अब इसका खूबसूरती का वक्त आ गया और आगे चल के और अच्छी होगी इंशाल्लाह। चलें जी, आपको लिए चलते हैं छोटे विक्की की जानिब। आपने इनके बल्ले की बातें तो देखी हैं ग्राउंड के अंदर, इनके बैट से बहुत अच्छी बातें करना जानते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि मेरा बैट बहुत अच्छी बातें करता है। ये खुद कितनी अच्छी बातें करते हैं ये हम इनसे बात करके पता करेंगे। जी छोटे विक्की, आपको छोटा विक्की वैसे कहा क्यों जाता है? एक्चुअली जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मुल्तान में ऑलरेडी एक बड़ा विक्की था, उसका नाम विक्की था,
तो फिर मेरी हाइट उससे ज़रा छोटी थी, उसकी हाइट मुझसे ज़रा बड़ी थी, तो फिर दोनों ही विकी थे, तो उसको बड़ा विकी कहने लग गए और मुझे छोटा विकी। कैसा लग रहा है खेल के KTPL? पिछली नेक्स्ट टाइम जो पहला KPDL हुआ था उस पर मैं नहीं आ सका था फैमिली इशू की वजह से, लेकिन ये मेरा फर्स्ट है तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है इस तरह के इवेंट खेलकर, क्योंकि आपको पता है कि टेप बॉल को इतना प्रमोट नहीं है टेप बॉल। तो मैं ज़ुबैर भाई का और दानिश भाई का जो इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, तो इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि टेप बॉल को इतना प्रमोट कर रहे हैं। राइट, आपके चेहरे पे काफ़ी संजीदगी है, सीरियसनेस है, क्या आप वाकई ऐसी हैं या सिर्फ एंकर को देख के ऐसे हो गए आप? नहीं ऐसे ही है, मैं शुरू से ही एक खामोश तबीयत पर्सन हूँ, तो मैं ज़रा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तन्हाई पसंद है? हाँ जी। अच्छा, और यहाँ पर जब आप प्लेयर्स के साथ होते हैं तो तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है या वहाँ पर आप जीत के आए साइड में बैठ गए अपनी ट्रॉफी लेकर? नहीं जब प्लेयर के नहीं जेबी वाला हाल नहीं है, जब टीम के साथ होते हैं फिर टीम के साथ होते हैं, जब अकेले होते हैं फिर अकेले होते हैं। अच्छा, किस प्लेयर को आप समझते हैं जो बहुत ही जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग उसको देखें तो बोले ओह शाहिद अफरीदी आ गया हमारी टीम का? हमारी टीम में तो जेबी बहुत अच्छा बैट्समैन है माशाल्लाह से और बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। अगर शाहिद अफरीदी के लिहाज से कहा जाए तो वो क्रिकेट में अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त दी है वो तैमूर मिर्ज़ा है। हाँ जी, उसी को शाहिद अफरीदी कहा जाता है और इतनी फ़ैन फॉलोइंग जितनी भी है ना सबसे ज़्यादा उसी की है, तो मैं तो उसी को कहूँगा कि वही शाहिद अफरीदी है टेप बॉल का। अच्छा, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको फेस करते हुए आपकी काम पे टांग जाती हैं? हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कोई बॉलर नहीं है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से होता है कि मुख्तलिफ ग्राउंड में मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि हवा चल रही होती है तो एक एंड से ज़रा मुश्किल होता है और एक एंड से बड़ा इजी होता है खेलना, तो ये ग्राउंड की कंडीशन के ऊपर होता है। बाज़ औक़ात आई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा होता इंसान का, तो उस वजह से जब आई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा होता तो फिर आपको किसी भी बॉलर को खेलने में प्रॉब्लम होती है। सही। अच्छा, छोटा विकी आपने बता दिया कि मुझे, क्या घर वाले भी आपको इसी नाम से पुकारते हैं, कोई और आपका निकनेम रखा हुआ है उन्होंने? नहीं, घर वाले वकास के नाम से पुकारते हैं, बाकी जो मेरे यार दोस्त हैं जितने भी हैं वो सब मुझे विकी के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, ये बताएं कि टेप बॉल आप खेलते थे, आपने डेफिनेटली स्ट्रीट से स्टार्ट करते हैं अमूमन, तो आपने गली में खेलना शुरू किया या डायरेक्टली ग्राउंड में जाते थे, या जिस जगह आप रहते हैं? बेसिकली ही बिलोंग्स टू मुल्तान, और मुल्तान एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स आपके निकले हैं। अगर हम बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इंज़मामुल हक हैं, उसके अलावा शब्बीर भी मुल्तान से ही करीब रहते हैं, फास्ट बॉलर शब्बीर भी रहते हैं, उसके अलावा अब्दुल रऊफ़ खान और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सोहेब मकसूद हैं। तो ये बताएं वहाँ पर टेप बॉल का कितना रुझान है? टेप बॉल का इस टाइम तो पूरे पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, और मुल्तान में तो कुछ ज़्यादा ही है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है टेप बॉल का रुझान ना। तो मैं स्ट्रीट में पहले खेलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्राउंड में आया, फिर अल्लाह पाक ने ऐसा हाथ पकड़ा है कि आज इस मुकाम पे बैठे हैं। अब कैसा लग रहा है, क्योंकि अब पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, पहले तो गली मोहल्लों में तो कोई भी नहीं दिखता था, आंटियां भी आपकी गेंद छुपा लेती होंगी जब जाती हुई घर के अंदर। ऐसे ये प्राउड फील होता है जब आप इस मुकाम पे खेल रहे होते हैं। बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, उन्हीं की दुआओं की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। अगर वो ना दुआएं देते तो शायद मैं इस मुकाम पे ना होता। बहुत खूबसूरत बात की है। मुझे ये बताओ कि जब आप खेलते हैं, मतलब मोहल्ले में खेलते थे, अक्सर ही होता है कि आप खेल रहे हैं, आपने शॉट मारा, तो क्या आप उसी से कहते हैं भाई जाके उठा कर लाओ, या वो कह देता है बॉलर के भाई तुमने मारा शॉट, तुम खुद उठा कर लाओ? खुद बॉल उठानी पड़ती है। ग्राउंड में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मोहल्लों में ऐसा होता है। जब स्टार्ट की थी तो छोटे थे, तो अक्सर ऐसे ही यार दोस्त जो खेलते थे स्ट्रीट के अंदर, तो अक्सर बॉल गुम हो जाता था तो कहते थे जाकर आप लेकर आओ, खरीद के लानी पड़ती थी। हाँ, कभी खरीद कर लानी पड़ती थी, कभी ढूंढ कर लानी पड़ती थी। अच्छा, चंदा जमा किए कभी बैट और बॉल के लिए? हाँ बिल्कुल किया है। एक टाइम था, क्योंकि मैं इतना पीछे से बैकग्राउंड हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से इस मुकाम पे पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बस फिर जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब स्टार्ट में क्रिकेट स्टार्ट की तो उस टाइम फिर चंदा जमा करना पड़ता था। अच्छा, फास्ट बॉलर कौन ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये बस हमारे किसी इंटरनेशनल फास्ट बॉलर के इक्विवेलेंट है, लाइक शोएब अख्तर को कहते हैं स्पीड स्टार, या उनकी तरह है, या
हारिस रऊफ के साथ कभी खेलना हुआ, क्योंकि टेप बॉल तो वो भी खेलते रहे? जी हारिस रऊफ एक दफ़ा मुल्तान आए थे तभी हाँ। खेले थे, उसके बाद वो फिर टेप बॉल छोड़ गए थे, हार्ड बॉल में चले गए थे, फिर वो लाहौर कलंदर वगैरह खेलते रहे, तो फिर वो एक ही दफ़ा फेस हुआ था उनसे। कभी दिल चाहता है कि आप भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हैं? हाँ, देखिए जी, उस मुकाम पे जाने को तो हर इंसान का दिल चाहता है कि उस मुकाम पर जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टेप बॉल में हम जिस मुकाम पे आए हैं तो मैं बड़ा खुश हूँ और पुरस्कून हूँ। कोई मैसेज देना चाह रहे हैं यंगस्टर्स को, क्योंकि आपको बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं यंगस्टर्स जो देख रहे हैं, कुछ सीखना भी चाहते हैं, कुछ बताएंगे आप? कोई छोटी मोटी टिप्स ही बता दें हमारे राइजिंग स्टार्स को। जो यंगस्टर हैं उन्हें मैं यही कहूँगा कि ग्राउंड में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जो अपने सीनियर प्लेयर हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ चलें, मिलकर चलें, और जो अपने जूनियर्स हैं उनको भी लेकर चलें। तो जितना टाइम वो ग्राउंड में स्पेंड करेंगे उतने अच्छे प्लेयर बनेंगे, क्योंकि जो टैलेंट होगा वो ग्राउंड में आएगा तो निखरेगा। कराची में क्या चीज़ पसंद आई है आपको? इतने अरसे से माशाल्लाह से आप हैं, 16 डेज हो रहे हैं। हाँ जी, कराची तो मैं आता रहता हूँ, कराची की बिरयानी मुझे बहुत शौक से खाता हूँ। चलिए, ये तो हम आपसे रैपिड फायर में पूछने वाले थे, लेकिन आपने यहाँ भी बता दिया, हम उसमें भी दोबारा पूछेंगे, उसमें कंपैरिजन करवाएंगे आपसे। ये तो हो गया एक छोटी सी मुलाकात जिसमें आप डीके से मुलाकात की, इनफैक्ट दानिश खान साहब और साथ में छोटा विकी से। लेकिन अभी हम खत्म नहीं कर रहे, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इनसे करेंगे रैपिड फायर। वेलकम बैक, एक मतलब फिर नाज़रा मुश्ताक आपके साथ हाजिर है और यहाँ पर सेगमेंट हुआ जाता है रैपिड फायर का। अब देखना ये है कि ये क्या फायरिंग कर रहे हैं दोनों। सबसे पहले डीके से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे छोटा विकी से। सेम हम क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं दोनों के क्या क्या नजरियात हैं। जी दानिश साहब, आप ये बताएं कि हार्ड बॉल या टेप बॉल? हार्ड बॉल देखने की हद तक, और टेप बॉल खेलते भी हैं, और अब खेलते हैं तो अभी टीम लेके बैठे हैं और साथ साथ इसको लेके एंजॉय भी कर रहे हैं। यस। मैं भी टेप बॉल को प्रमोट करूँगा, क्योंकि मैं खुद टेप बॉल खेलता हूँ, तो मैं टेप बॉल को ही करूँगा। ग्राउंड क्रिकेट या गली क्रिकेट? ग्राउंड क्रिकेट। XYZ कहीं भी मिल जाए, क्रिकेट होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। आपने कभी खुद खेली? मैं खेलता हूँ क्रिकेट बहुत अच्छी, और मैं अपने मेरा जो बचपन गुजरा है, आप बचपन मतलब 5 साल पुराना 7 साल पुराना जो टाइम गुजरा है, इसमें प्रॉपर मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ। गली की भी खेली है, ग्राउंड की भी खेली है, और बहुत अच्छी खेली है। फूडी हैं? फूडी में हूँ। बिरयानी कराची या लाहौर? मुझे राइस मिलने चाहिए, मैं चावल का दीवाना हूँ, चावल मिलने चाहिए किसी भी लेवल या के हो। लाहौर? कराची, जाहिर है कराची, आपको पता है कराची से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट लाहौर की भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कराची कराची है। कराची है जी। कराची, क्योंकि डेफिनेटली कराची मशहूर है बिरयानी के लिहाज से, तो मैं भी कराची कहूँगा। कराची में कितनी दफ़ा बिरयानी खाई है तुमने? मोस्टली बहुत दफ़ा खाई है, अनगिनत दफ़ा खाई है, कुछ गिन नहीं सकते, बहुत दफ़ा खाई है। जब भी कराची आए सबसे पहले बिरयानी खाई है। फनकारों की तरफ आते हैं, आप तो बड़ी लीक्स करवाते हैं फनकारों की, और अभी भी रिसेंटली भी कुछ ऐसे काम आप करने जा रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नीलम मुनीर या सबा कमर? सबा कमर। हाँ, मैं इतना एक्टर्स की तरफ जाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है, मैं नीलम मुनीर ही कहूँगा। शाहिद अफरीदी? ये ऐसी आंखों से देखते हैं, यूं शर्मा के साइड से। शाहिद अफरीदी की शोएब अख्तर? शाहिद अफरीदी। लाला शाहिद अफरीदी। अच्छा, निकनेम बताइएगा अपना। डीके। डीके, यस। विकी। विकी। विकी की तरफ ही रखते हैं हम। विकी, ये बताएं कि बैटिंग या बॉलिंग चूज करें, कौन सा आपको ऑप्शन करना है? बैटिंग, क्योंकि मैं बैट्समैन हूँ। बॉलिंग कभी नहीं की? नहीं, कभी नहीं की। यस। डी के आप? बैटिंग। बैटिंग। कितना स्कोर हाईएस्ट है? मुझे कभी आइडिया नहीं है कि क्या किया है, लेकिन बहरहाल हाईएस्ट होगा 40 रन कभी बना लिए तो बना लिए। विकी, कभी याद है अपना हाईएस्ट स्कोर? जी बिल्कुल याद है। मैं रिसेंटली रमज़ान में टूर्नामेंट हुआ था शिदातपुर नाइट, तो 8 ओवरों का मैच था, तो मैंने 152 किया था। नेशनल स्टेडियम या कज़ाफ़ी स्टेडियम? नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम, कराची, सिटी ऑफ द लाइट। डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? डिजिटल का दौर है और डिजिटल बहुत आगे है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से डिजिटल।
मैं भी दानिश भाई की बात को एग्री करूंगा क्योंकि डिजिटल का ही दौर है। ट्विटर या फेसबुक? फेसबुक में। ट्विटर का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे इतनी खूबसूरत प्रोग्राम में और इतनी खूबसूरती के साथ आपने बातचीत की। यकीनी तौर पे आपको भी अच्छा लगा होगा कि डीके के जो सोच है, आगे की प्लानिंग्स क्या हैं, उसके अलावा छोटा विकी के आपने बारे में सुना। हम आपको ये भी बता दें कि आज 2 सेमीफाइनल्स हैं। पहला सेमीफाइनल जो है वो क्लिफ्टन वर्सेस गुलशन गौहर्स और दूसरा सेमीफाइनल जिसमें डीएचए दबंग जो है वो सामना करने जा रही है लियारी लेजेंड्स का। अब देखना ये है कि कल फाइनल के लिए कौन सी 2 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी। कल हमारा फाइनल होगा बदर एक्सपो KTPL सीज़न 2 का 7 बजे स्टार्ट होगा और ये जब ख़त्म होगा तो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हमेशा की तरह जैसे पिछले सीज़न में हुई थी, ओपनिंग भी बहुत ही ग्रैंड थी और इसी तरह से क्लोजिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से होगी। यकीनी तौर पे आप लोगों को दिल चाहेगा आने का। तो जो लोग बहुत दूर हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू एंजॉय करें और जो लोग कराची में रहते हैं वो तो आ भी सकते हैं, यहाँ पर कोई मना नहीं किसी को भी। तो आप आइए, एंजॉय कीजिए KTPL सीज़न 2 का। यहाँ पर मैं भी चाहती हूँ आपसे इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहे खुश रहें, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी का साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं IMS इलेक्ट्रिक की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। IEEE का जो फेयर हो रहा है ये एक बहुत ही नादिर मौका है। इस पे हम लोग भरपूर शिरकत कर रहे हैं IMS की जानिब से। IMS के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर एक तरह से एक यूनिक कंपनी है जो कि पूरी पावर ट्रेन को फ्रॉम पावर जनरेशन टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन ऑफ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये पूरी की पूरी जो ट्रेन है पावर की उसको हम कवर करते हैं। और वी आर ऑल्सो इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ एक्वायरिंग हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफार्मर्स। तो इस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तानी कंपनी के तौर पर सामने आ रहा है। वक्त की ज़रूरत है कि हम दोबारा मेक इन पाकिस्तान की तरफ वापस जाएं। हमने बहुत वक्त गंवा दिया है और इस मौके पर IEEE की जानिब से जो ये फेयर हो रहा है और बदर एक्सपो वाले जो इसको अरेंज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है इंडस्ट्री के प्लेयर्स जो हमारे जैसे हैं उनके लिए, और फिर पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री में मुख्तलिफ यूज़र्स हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आएँ और देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कंपनियाँ क्या बना रही हैं और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद इन्हिसारी के ऊपर अज़्म के साथ आगे बढ़ते हुए अगर पाकिस्तानी चीज़ों का इस्तेमाल करें अपने प्रोजेक्ट्स में, तो ना सिर्फ हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मसनूआत हैं उनकी क्वालिटी और उनकी जिद्दत में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा। ये फेयर जो है इसके अलावा हमें इस बात का भी मौका देता है कि हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को, उनके जो सॉल्यूशंस हैं इंडस्ट्री के लिए, उसको देख सकें और एक ही जगह पे हम एक ही वक्त में इस तरह की नेटवर्किंग कर सकते हैं जिसमें इस तरह के मौके में मिलेंगे। इसके साथ साथ फिर जो लोग इन टेक्नोलॉजीज़ के पीछे हैं, जो ब्रेन्स हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये मौका हमारे लिए, हम सब के लिए, ख़ुद मेरे लिए भी बहुत अच्छा मौका होगा कि मैं उन लोगों के साथ रीच आउट कर सकूं। और मैं अगेन IEEE का ख़ास तौर पर और बदर एक्सपो का इस बार हवाले से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तरह के इवेंट को यहाँ पर मुनक़्क़द किया है।
और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे यंग इंजीनियर्स की जानिब। हमारे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं हर साल बहुत सारे यंग इंजीनियर्स पैदा करती हैं, बेहतरीन लोग हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ खत्तों में इन्होंने अपनी हुनर को मनवाया है। और उनके लिए भी ये मौका है कि वो आएँ और वो ये देख सकें कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबे में कौन सी कंपनियाँ हैं जो उनको न सिर्फ माश के मौक़े फ़राहम करें बल्कि उनकी तरबियत भी कर सकें और इस तरह से उनके जौहरों को निखार सकें। तो मैं इख्तिताम पे IEEE का और बदर एक्सपो का बहुत मशकूर हूँ कि उसने IMS इलेक्ट्रिक को इस बात का मौका दिया है। 3, 4 और 5 अक्टूबर को पाकिस्तान के कराची के जो एक्सपो सेंटर है उसमें मौजूद होंगे और बदर एक्सपो और IEEE हमें ये मौका फ़राहम कर रहा है कि हम इन 3 दिनों में वहाँ आकर इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल फेयर्स में से एक यूनिक फेयर है और हम खुद इसमें बहुत शिरकत करते रहते हैं और मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत कुछ इसमें सीखने का मौका मिलता है। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप लोग आएँ और शरीक हों और मिलजुल के हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएँ। मेक इन पाकिस्तान, लिव इन पाकिस्तान, दैट इज़ द फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल बाबानी है और मैं डायरेक्टर सेल्स हूँ फैक्टर LED लाइट्स का। और हम लोग जो है LED लाइट्स को हम प्रोवाइड करते हैं बाज़ार के एतबार से और हमारी मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं, स्ट्रीट लाइट हो गई, फ्लड लाइट हो गई और ये शोबाजात में हम अपना काम कर रहे हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को यानी कि मैं अपनी कंपनी का भी मुतारुफ करवा दूँ कि हम बाबानी ग्रुप के अंडर में आते हैं और इसमें फैक्टर का काम है। इसके अलावा लोंगी कंपनी है सोलर के एतबार से जो दुनिया की टॉप ऑफ द वन कंपनी है, वो कंपनी के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और इसके अलावा जिनको सोलर है उसके भी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सनग्रो इन्वर्टर हैं, इसके भी हम इसके जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और ऑलरेडी हम लोग LED लाइट्स में मौजूद हैं। पिछले 2018 से हम जो है ये काम में हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारे डीलर्स मौजूद हैं। हमारी सर्विस का मयार हम कोशिश करते हैं कि लोगों को मयारी चीज़ और अच्छी कीमत में फ़राहम करें। दूसरी बात ये है कि जो स्टॉल हम अभी एक्सपो सेंटर में IEEE के ज़रिए अभी हम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे दोनों पार्टनर लोंगी सोलर और जो है सनग्रो सोलर ये भी हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं और फैक्टर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह है। हम इसमें प्लाटीनियम स्पॉन्सर के तौर पे आपको इंशाल्लाह दावत देते हैं और मैं सब तमाम इदारों को दावत देता हूँ। ये जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी इदारे हैं आर्किटेक्ट्स वगैरह के इंजीनियर हैं वो आके हमारे स्टॉल पे विज़िट करें और ये 3, 4 और 5 अक्टूबर को इंशाल्लाह हम वहाँ पे आपका इंतज़ार करेंगे। मुझे एक बात बताते हुए और खुशी महसूस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि LED लाइट्स की कंपनी में हमारी तेज़ तरीन ग्रोथ है जो हमारी बाज़ार के एतबार से भी और तमाम डीलर्स के एतबार से भी ये सब अल्लाह ने करम किया, मदद फरमाई, आसानी फरमाई और तमाम लोगों की मेहनत है। जैसे मेरी स्टाफ टीम है, तमाम मेरे इंजीनियर्स हैं और जितने भी मेरे सेल्स के लोग हैं और जितने भी मेरे डीलर्स हैं, ये खाली फैक्टर कंपनी की मेहनत नहीं है, इन सब की मेहनत है। हमारी जो प्रोडक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम DMCs में जाती हैं और तमाम शाहराएँ हमारी LED स्ट्रीट लाइट से रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि CNW में और DMCs वगैरह के ज़रिए पूरे पाकिस्तान की तमाम शाहराओं को रोशनी की तरफ गामज़न करें। और ये जो तवानाई का बहरान है, जो तलब और रसद में जो कमी है, वो हमारे ज़रिए, हमारी प्रोडक्ट के ज़रिए काबिल यानी कि इस काबिल हो कि इसके जो डेफिशिएट है उसको हम कम कर सकें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दानिश सईद है और मैं जनरल मैनेजर डेप्स इंटरनेशनल हूँ, दीवान एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस। हम लोग सोलर का बिज़नेस करते हैं, रिटेलिंग एंड EPC बोथ, एंड वी आर बेस्ड इन दुबई, कतर, पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान में भी 3 मेजर शहर हैं, इसमें कराची है, इस्लामाबाद है और लाहौर है। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन आवर ऑफिसेज इन क्वेटा एंड पेशावर। वी हैव ऑल्सो वेयर हाउसेज इन मुल्तान, सक्खर, रहीम यार खान एंड सियालकोट, also in Faisalabad.
तो हम अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं IEEE में, और इसके अलावा ये है कि हम वी सी इट एज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन मीट पीपल बोथ द एंड यूज़र्स एंड द सेलर्स, और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हमारे पास और अच्छी कौन सी प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं फॉर आवर बिजनेस जो कि हमारे लिए फीजिबल हों। प्लस इसके अलावा ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें वहाँ पे और सारे जितने भी एंड यूज़र्स हैं एनर्जी के, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के, वो हमें वहाँ पे मिल सकते हैं। विजिटर्स के लिए हम लोग अब पावर सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं जिसमें EPC और PPA बिजनेसेस हैं। वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान फॉर कार्बन क्रेडिट्स। इसके अलावा रिटेल बिजनेस भी है। वी कैन सेल अ लॉट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स एज वेल, जिसके अंदर इसके साथ साथ वो भी है, इसमें इलेक्ट्रिकल BOS भी है, और इसके अलावा हम पूरा एक वन विंडो सोल्यूशन लेके आ रहे हैं फॉर सोलर एंड यूज़र्स। बदर एक्सपो इस पूरे इवेंट को मैनेज कर रहा है, और इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है विद सक्सेस स्टोरीज़, और IEEE इन्हीं की तरफ से मैनेज किया जा रहा है फॉर मे बी मोर देन डिकेड नाउ, और दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एक्चुअली मेक एंड यूज़र्स एंड सेलर्स मीट एज वेल। और इसके अलावा ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस इवेंट में आएंगे, और वी विल बी देयर टू वेलकम यू एंड प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस। इसके अलावा ये भी है कि हमारी जो वहाँ पे जो जितनी भी अपग्रेडेशंस हैं इनटू द टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर स्पेसिफिकली, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। This is Harish Shahid, Director of Orange Electric, and we've been working in Pakistan since 2006. Alhamdulillah, we're working in 8 cities in Pakistan, including all the big channels of Pakistan: Islamabad, Lahore, Karachi, Multan. And we've been in Pakistan for the last 17 years, and we've been attached with IEEE for the last 9 years, since 2014. And it's been a successful journey with IEEE, and it's been a pleasant experience every time. Last year we participated in IEEE, and just like every other year, it was a very successful exhibition. And last year, I believe it was in around September, when we had 4 stalls at IEEE, and we had a massive exhibit stall over there, and we had a massive turnout as well. We had very relevant consultants coming to us, we had engineers, we had builders from the industry who knew us from the last 10 years, and there were some new clients also who visited us, and it was a very pleasant experience. So it's been a journey of 8 to 9 years, where at some times we've been sponsors of IEEE as well, and it's been very productive for us. Last year we were not sponsors, although we had 4 huge stalls, but this year again we're proud bronze sponsors, and we're hoping that this bronze sponsorship is going to bring us fruitful results like it does every time from IEEE channel. And we're going to highlight some new products this time, including automation materials for home and for hotels as well. And we're bringing a new switches series called Odessa series, which we're already supplying to some hotel clients in Lahore and other places in Punjab. So we're going to highlight some new series this time, and with European finish, so hopefully that's going to create an impact. So this exhibition is starting in the first week of October, as you all might know already. It's starting on 3rd October, and I would love for all of you to join us and be part of this healthy community where there's competition as well. And I would love for all of you to join us in the interactive and informative seminars and all the conferences that we'll be having during the 3 days. And it's going to be a very nice learning experience, and for new players as well, and for old players, because there's always room for learning. And these seminars will provide some kind of new information that will come in handy for us in the future, inshallah. Assalamu alaikum and hello, my name is Vakas. I'm the Chief Business Officer at Mtronic. IEEE is one of the major conferences for electronics and electrical devices within Pakistan, and it serves as a vibrant ecosystem for the EE space within the country. So it's an important showcase for anyone who wants to, explore new projects or form partnerships and ventures with like-minded companies and individuals. The future of electronics and electrical devices in Pakistan is immense. As an emerging market, Pakistan holds a lot of potential, and we need to bring in homegrown products into the market so that we can essentially dive into the ecosystem of this emerging market and deliver products that are needed
within the markets, both in businesses and homes. This is going to be our first time at IEEE, but based on past feedback from other exhibitors, we think it's going to be a great experience for Mtronic as an organization. The reason why we are choosing to showcase Mtronic here is because we believe that this is the place to be for electronics and electrical devices. Mtronic, being a smart automation solution for buildings, presents an amazing opportunity for like-minded companies to collaborate with us, and we also see this as an opportunity for us to connect with like-minded companies, individuals, and form partnerships and ventures as we dive deep into the Pakistani market and go global. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद ज़मान है और मैं A to Z इंजीनियरिंग स्विचगियर प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ और मेरी ये फर्म साइन 1993 में कायम हुई थी और बहुत छोटी सी फर्म को लेकर मैं चला हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूनिट 1 और यूनिट 2 है जिसे मैं रन कर रहा हूँ और लो वोल्टेज स्विचगियर हमारी बेसिक प्रोजेक्ट है और लो वोल्टेज के साथ साथ हमने मीडियम वोल्टेज एचटी पैनल वगैरह भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी हमारे क्लाइंट है जिसमें हम मीडियम वोल्टेज पैनल भी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो है वो बसवे की फैक्ट्री लगाने का है जो यूनिट 2 पोर्ट कासिम पे हमारा नया यूनिट तैयार हो चुका है, तो हम इंशाल्लाह वो यूनिट भी अनकरीब लॉन्च कर देंगे। हम इस मरतबा भी स्टॉल पे एचटी पैनल यानी मीडियम वोल्टेज पैनल रख रहे हैं और मज़ीद चीज़ें रख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग इस मरतबा भी 3, 4, 5 तारीख को अक्टूबर को एक्सपो में आ रहे हैं। उसमें भी आप लोग आएँ और हमारे स्टॉल को देखें। हमने सिल्वर स्पॉन्सर किया है और इंशाल्लाह हम अच्छी प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे और दूसरे कि आप लोगों के भी कमेंट्स हम लेंगे कि हम कहाँ तक अपनी प्रोडक्ट को देने में कामयाब है या आपकी हम रिक्वायरमेंट मज़ीद और किस तरह से फुलफिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीम अहमद है और मैं ओसाका लाइटिंग का CEO हूँ। ओसाका लाइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटिंग कंपनी है। मैं अपना कंपनी का थोड़ा सा आप हज़रात को तारुफ़ करा लूँ। 2001 से हमने लाइटिंग की इब्तिदा की। जैसे 92 से हम PVC टेप हमने सबसे पहले ओसाका के नाम से मुतारिफ़ कराया था पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक चप्पे पे एक शहर में सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की लाइटिंग से इस वक्त चमक दमक रहा है वो। और हम इस वक्त सारे बैंक्स में, होटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में और कोई भी जो बड़ा प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट का इदारा हो, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की लाइटिंग वहाँ पे मुतारिफ़ हो चुकी है और वहाँ ओसाका की लाइटिंग जो है ना इस वक्त चमक दमक रही है। हमने पूरा पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा इदारा है पार्लियामेंट हाउस, हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की पूरी LED में हमने कन्वर्ट किया और प्रेसिडेंट हाउस है उसको भी हमने पूरा LED लाइट्स में कन्वर्ट किया। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो जैसे जैसे जिद्दत दुनिया के अंदर होती रही, नई नई चीज़ें आती रहीं, हम भी वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ें नई नई मुतारिफ़ कराते रहे। हमारी कोशिश यही रही है कि ये मुल्क के अंदर, हमारा मुल्क बहुत प्यारा है पाकिस्तान, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लाइटिंग के अंदर मुतारिफ़ कराई जाएं जिससे हमारे मुल्क के जो कंज्यूमर हैं, जो हमारे मुल्क के इदारे हैं, उससे रोशन जो होते रहें और इससे ज़्यादा वो मुस्तफ़ीद हों और इससे ज़्यादा फ़ायदा हों। तो आजकल LED लाइट की दुनिया है, तो नई नई चीज़ें उसके अंदर आई हैं, तो ओसाका लाइटिंग भी नई नई चीज़ें मुतारिफ़ करा रही है और वारंटी के साथ दे रही है और प्राइस पे हम और क्वालिटी पे हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी मुनासिब होती हैं
कि हर आम यूज़र जो है ना उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ओसाका के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है कि हम जो है एक लाइटिंग की दुनिया में अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए एक बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस हवाले से भी आप सब हज़रात से बात करना चाहता हूँ। IEEE जो है माशाल्लाह कई सालों से एक एक्सपो सेंटर में हमारे जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए एक नुमाइश करती है। जो हमारे वहाँ इंडस्ट्रीज़ के जो नुमाइंदे आते हैं उसमें शिरकत करते हैं तो उससे बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जितनी भी लाइटिंग से मुताल्लिक जितनी भी मसनूआत इस मुल्क के अंदर बनती हैं वो सारे के सारे इसमें हिस्सा लेते हैं, अपनी मसनूआत के फ़वाइद बताते हैं और दूर दूर से पाकिस्तान के हर इलाके से, हर शहर से यहाँ इस जो एक्सपो में आते हैं और इस नुमाइश में शिरकत करते हैं। ये नुमाइश आज पहली मरतबा नहीं लग रही, बल्कि 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये नुमाइश लग रही है। इससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इससे हमने भी बहुत फ़ायदा उठाया है इस नुमाइश में शिरकत करके, क्योंकि जब हम डायरेक्ट कंज्यूमर से, डायरेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट से हम मिलते हैं तो हम उसको अपनी बात भी पहुंचाते हैं आसानी से। तो ये माशाल्लाह एक बहुत कामयाब तरीन नुमाइश है और मैं आप सब हज़रात से गुजारिश करूँगा, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी लाइटिंग से वाबस्ता लोग हैं, वो इसमें ज़रूर शिरकत करें, इसको आएँ, देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। माशाल्लाह मैंने कई मरतबा देखा है हमारे फॉरेनर्स भी आते हैं, जो हमारे बाहर से आए चाइनीज़ हैं या सिंगापुर या मलेशियन या इंडोनेशियन जो यहाँ हैं, जिनके यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो भी आन के इस जो IEEE से जो फ़ायदा उठाते हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान में देखें कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं और क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या मेयार की चीज़ें यहाँ बन रही हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो इवेंट है ये 3 से 5 अक्टूबर को इंशाल्लाह होने जा रहा है 2023 में। तो आपसे मैं कहूँगा इस इवेंट का हिस्सा बने, क्योंकि इसमें सिर्फ ये काम नहीं होगा, इसमें और भी काम होंगे। इसमें कॉन्फ्रेंसेस होंगी, इसमें बाकायदा लेक्चर्स होंगे जो आप लोगों को बताए जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उन लेक्चर्स, उन कॉन्फ्रेंस में भी मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्फ्रेंस होंगी, उसमें भी शिरकत करें ताकि उससे भी आप फिर एक मुस्तफ़ीज़ हों। अच्छा, मैं मुबारकबाद दूंगा बदर एक्सपो को, क्योंकि इसके जो माशाल्लाह ज़ुहैर साहब हैं वो माशाल्लाह बड़े जीनियस, बड़े एक्सपर्ट हैं वो, तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह इसी तरह वो मुल्क के लिए काम करते रहेंगे, इंडस्ट्री के लिए काम करते रहेंगे, एक ताजिर तबके के लिए काम करते रहेंगे, ताकि हमारे यहाँ ताजी तबका तरक्की करे, हमारी इंडस्ट्री तरक्की करे। तो इंशाल्लाह इससे सबको फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलेमान कयूम है। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ गफूर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। गफूर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रिकल स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये पाकिस्तान में 1983 से एग्जिस्ट कर रही है और स्विच गियर से रिलेटेड EPC प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज वो हम प्रोवाइड करते हैं। गफूर इंजीनियरिंग वापडा, NTDC और MES में एक अप्रूव्ड कंपनी है। IEEE का जो फॉरम है ये स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज प्रोवाइडर जो कंपनीज़ हैं उनके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए एक बेस्ट फॉरम है। तो हम लास्ट ईयर भी हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था और अब भी हम इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। थैंक यू। It's 2 p.m.
afternoon and a very warm welcome, ladies and gentlemen. May I once again request you all to kindly be settled as we are now about to begin our program. Once again, ladies and gentlemen, all the distinguished guests in the auditorium, may I request you to kindly be seated as we are now about to begin our program. Honorable Khwaja Muhammad Asif Sahab, the Defence Minister of Pakistan, Honorable Sayyid Faisal Ali Sabzwari Sahab, Federal Minister for Maritime Affairs, Islamic Republic of Pakistan, Admiral M. Amjad Khan Niazi, Nishan-e-Imtiaz Military, Sitare Basalat, Chief of Naval Staff Pakistan, Zuhair Nasir Sahab, the CEO of Badar Expo Solutions, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very warm welcome. On behalf of the Pakistan Navy, I welcome you all to the launch event of Pakistan International Maritime Expo and Conference, namely the PIMAC 2023. This premier edition of the Pakistan International Maritime Expo and Conference is being co-organized by the Pakistan Navy and the Badar Expo under the patronage of the Ministry of Maritime Affairs. The exhibition will bring together stakeholders and companies from a diverse maritime fields to exploit and explore the potential of blue economy. Ladies and gentlemen, we'd like to formally begin this ceremony with the recitation of the Holy Quran and Durood Pak. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان He is Lord of the two east and the two west. Then which of your Lord's favors will you both deny? He merges the two bodies of fresh and salt water, yet between them is a barrier they never cross. Then which of your Lord's favors will you both deny? Out of both waters come forth pearls and coral. Then which of your Lord's favors will you both deny? To him belong the ships with raised sails, sailing through the seas like mountains. Then which of your Lord's favors will you both deny? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jazakallah khairan. Ladies and gentlemen, if the oceans were to be a country, they would be the 7th largest economy of the world.
There is so much that we can learn from just this statistic. When we talk about the blue economy, it is a magnanimous concept, and perhaps it's high time that we explore the true potential of it. But just to give you a few numbers, the studies today point to that there will be a 120% job increase from the year 2010 to 2030 in fisheries and aquaculture. Moreover, there is about 3 to 5% of the global GDP that depends on the Oceania alone. And today, as we are launching PIMAC 2023, it is to actually venture into this new chapter where we explore the true potential of much more that is to follow. Not only will it give us the livelihoods and the vibrancy to our economy, but also if you look at the current subjects of the environmental change and the climate change, 90% of the excess heat that the world produces is absorbed in the oceans. So without the blue economy taking off, there is little hope for humanity. Keeping this broad vision in mind, we see that the collaboration has happened, and today we bring to you PIMAC 2023, a forum where the best of the best players from organizations to individuals to experts to subject experts and countries who have truly harnessed the potential of blue economy will be coming together. What more is to be expected is what our speakers, our worthy speakers, will be alluding on. Ladies and gentlemen, the success of any initiative really depends on the people, the stakeholders that are directly contributing to it. And we're very proud to have on board the Badar Expo Solutions that have produced more than 1,000 trade shows, including the very successful international series of Ideas, of Expo Pakistan, Gwadar Expo, and many more. Ladies and gentlemen, let me now take this opportunity to invite the man with the vision, the Chief Executive Officer of Badar Expo Solutions, Mr. Zuhair Nasir, for his welcome address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Khwaja Muhammad Asif, Minister of Defense, respected Sayyid Faisal Ali Sabzwari, Federal Minister of Maritime Affairs, Mr. Israr Tareen, Minister of Defense Production, Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi, Nishan-e-Imtiyaz Military, Sitare Basalat, Chief of Naval Staff, distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. It is a proud moment for Badar Expo Solution to be collaborating with the Ministry of Maritime Affairs and Pakistan Navy for premier edition of Pakistan International Maritime Expo and Conference. The exhibition will highlight the potential of maritime sector in Pakistan and help in capitalizing the benefits of the blue economy. PIMAC is scheduled from 10 to 12 February 2023 at Karachi Expo Center. This three-day event will encompass a conference, breakout sessions, and an exhibition which will attract a large number of national and international exhibitors and trade delegations. Today's ceremony is focused on creating awareness about the upcoming PIMAC event and to encourage participation of all those associated with the maritime industry, with special emphasis on federations, chambers, government organizations, and private sectors. PIMAC will be instrumental in creating the fervor needed to amplify importance of maritime, trade, and blue economy. In the end, I may highlight it that Badar Expo Solution, with the support of Pakistan Navy and Ministry of Maritime Affairs, will put best efforts to make PIMAC event a success. I am hopeful that PIMAC will, inshallah, emerge as a premier maritime exhibition, contributing towards capitalizing the potential of blue economy. Thank you very much. Thank you, Zuhair Sahab.
They say we don't know what we've been missing until it arrives. But at the same time, we also do not take it literally. We take things for granted unless they are lost. I think the world is slowly coming out of the shock of the pandemic. And during the pandemic, what we saw most affected were not just the communities living close to the oceans, but also those serving to maintain the global logistics. So all sea routes, and especially the trade, got badly affected. There were those that had to be seaborne for many, many months and many weeks, and therefore the focus has come back to the sustainability of our practice when it comes to fisheries, to the aquaculture, and how we view the ocean. Ladies and gentlemen, it is said that 10 to 20% of the world's population directly depends on the fisheries and the aquaculture. So our practices of sustainability is paramount to ensure the livelihoods of those involved. And perhaps Pakistan will be taking the lead in these practices. To expand more upon and to allude more upon the theme and the vision of PIMAC 2023, now may I take the opportunity of inviting our next speaker. And as you also notice, the theme is a beautiful wordplay when it talks about see the future, where the C is SEA. How the blue economy is in the center of our endeavors. We shall have our next speaker talk about that. Ladies and gentlemen, please welcome ACNS, Maritime Affairs and Policy Research, Commodore Imran Afzal, for his presentation about the vision of PIMAC 2023. Honorable Defense Minister, Federal Ministers, Chief of the Naval Staff, Excellencies and distinguished guests, Assalamu alaikum. Oceans are a vital component of our planet, containing countless marine species and vast seabed resources. Besides being the cheapest medium for transportation of goods, oceans contribute towards the world's economy through tourism, fishing, renewable energy production, aquaculture and seabed resources. Economic activities in the oceans are expanding rapidly, driven primarily by growing population and globalization. Reliance on oceans has led to diverse economic interactions clubbed under the term blue economy, which covers industries focused on sustainable utilization of ocean-based resources. Geographical location of Pakistan offers shortest route to Indian Ocean for Central Asian republics, Afghanistan and western part of China through Karachi and Gwadar ports, presenting great potential for development at national as well as regional levels. China-Pakistan Economic Corridor is a manifestation of Pakistan's commitment towards utilizing the potential of blue economy through enhanced regional connectivity. Blue economy is increasingly adopted by developed nations for sustainable growth. Being cognizant of the importance of blue economy, Pakistan Navy has adopted a comprehensive maritime awareness campaign plan to sensitize relevant segments of society as well as policy makers. Across the globe, maritime exhibitions provide an ideal platform to showcase various products, systems and services leading to beneficial business partnerships. On the same lines, Pakistan International Maritime Expo and Conference (PIMAC) is an initiative of Pakistan Navy being organized under the patronage of Ministry of Maritime Affairs in order to jumpstart development of maritime sector in Pakistan and spur blue economy. PIMAC will focus on investment and collaboration in the fields of port operations, maritime logistics, sea transportation, ship building and repair, shipbreaking, fisheries and aquaculture, seabed resource exploration, maritime training and education, coastal tourism, renewable energy generation, environmental protection, marine engineering equipment and real estate development along the coast. Ladies and gentlemen, the objectives set forth for PIMAC are to provide opportunities to maritime industry to display products at one forum,
and interact directly with international maritime industry. Invite international maritime and defense manufacturers for joint ventures, transfer of technology and research to provide impetus to Pakistan's industrial setup. Highlight Pakistan's vast potential for blue economy, reinforce efforts in the realm of maritime diplomacy. In order to achieve the objectives of this national level event, support of relevant ministries, departments and business community will be essential during planning as well as execution stages. PIMEC will provide an ideal opportunity for interactions between the target customers and maritime industry representatives. A large number of trade and industry participants from local and international maritime sector are therefore being invited to attend the event. During PIMEC, an exclusive international maritime conference will also be held under the auspices of National Institute of Maritime Affairs, NIMA. Eminent speakers will exchange views on latest trends and scientific approach to various challenges related to maritime industry. Ladies and gentlemen, at the end, I may reiterate that PIMEC is a distinct event which will inshallah help in promoting sustainable, economically viable and mutually beneficial business relationships between maritime stakeholders across the globe. It is expected that G2B dialogues during PIMEC 2023 will also help to bridge the existing gaps and facilitate ease of doing businesses. Ladies and gentlemen, a promotional video on PIMEC 2023 shall now be screened. I thank you. Oceans have significant importance in human civilization, providing connectivity between unattached land masses since early ages. Globalization has further increased the importance of oceans. Blue economy is sustainable utilization of ocean resources for economic growth aimed to improve livelihood and create job opportunities. Blue economy covers multiple activities including port operations, aquaculture, fisheries, renewable energy, marine transportation, coastal tourism, shipbuilding and ship repairs. Blue economy has potential of approximately $24 trillion annually. However, nearly $600 billion is presently being exploited. Pakistan is gifted with a diverse blend of natural landscape, ranging from coastal areas of the Arabian Sea in the south to the mountains of Karakoram Range in the north. Pakistan has a long coastline, spanning over 1,000 kilometers along the Arabian Sea. Pakistan has exclusive economic zone of 240,000 square kilometers and 50,000 square kilometers of continental shelf. This vast swathe of sea area is not only a vital international maritime trade route, but also rich in diverse living and non-living resources. Pakistan has 3 commercial ports. Karachi Port is the largest port managed by Karachi Port Trust, handling nearly 60% maritime trade by volume. Mohammed bin Qasim Port is the second largest port, which handles 35% maritime trade, including liquefied natural gas. Gwadar Port is one of the deepest seaports in the world and holds great importance due to its strategic location astride the Gulf of Oman. Gwadar Port features liquefied petroleum gas facility and a recently established special economic zone as part of China-Pakistan Economic Corridor. Pakistan is all set to begin construction of a shipyard at Gwadar, which will be a major addition to the ship construction and repair facilities in the region. Pakistan's coastal areas provide vast breeding grounds for commercially important fishery resources, including crabs and shrimps, having potential worth of more than $2 billion annually. Almost 40,000 Pakistani citizens are directly or indirectly attached with fishing industry,
providing a huge workforce for exploitation of these resources. Pakistan's coastal area contains numerous scenic spots, including sandy beaches, cliffs, bays, deltas, islands, mud volcanoes, estuaries and mud flats. Pakistan's beaches are highly suitable for water sports activities, including boating, snorkeling, jet skiing, paragliding and scuba diving to promote coastal tourism. Pakistan's coastline contains a range of luxurious accommodation facilities to support coastal tourism industry. With an annual freight bill of $3 billion and business-friendly shipping policy, Pakistan offers great opportunity for investment in marine transportation sector. Gadani is an important hub for ship-breaking industry. Spread over 10 kilometers beach on the Arabian Sea, close to Karachi port, Gadani is the third largest ship-breaking yard in the world, employing around 6,000 workers to scrap nearly 1 billion tons on an annual basis. Karachi Shipyard and Engineering Works has state-of-the-art ship lift and transfer systems, which affords construction and repair of multiple ships as per international standards. Karachi Shipyard is also building various vessels for Pakistan Navy, including Milgem class corvette, Facom, tugs and GRP boats. Cognizant of the maritime potential of Pakistan, Pakistan Navy has taken various initiatives such as Maritime Security Workshop, maritime conferences and symposiums, visits and briefing to policymakers, engagements with media houses and business community, maritime-related curriculum, maritime awareness and publicity campaigns, observing World Ocean and Environment Day, Geological Survey of Pakistan's exclusive economic zone for hydrocarbon exploration, mangroves plantation, water sports gala to harness the benefits of the blue economy. Accordingly, Pakistan's International Maritime Expo and Conference, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, to bring together stakeholders and diverse maritime industries on one platform. PIMEC looks forward to B2G and B2B interactions, joint ventures and investment opportunities, since a large number of trade and industry visitors, including those from abroad, will be invited to the show. In Maritime Conference, eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on the maritime investment potential in Pakistan. Ladies and gentlemen, one of my most favorite sayings of all times that I have used time and again at a variety of occasions is, of course, sea inspired. No matter what direction the wind blows, you can always adjust your sails to reach your destination. And while we are talking about the potential and the opportunities, some great things are already happening on the horizon that we are unaware of. And while we just noticed the mangroves plantation, I'm happy to report that very recently we spotted a flock of flamingos that are back at the coasts of Karachi, which is again going back to nature. So the more you delve about this ecosystem, you see there's a whole world out there, a whole universe that we are perhaps unaware of. But sustainability and adopting practices that are nature friendly, that are eco-friendly, is where the true potential for humanity lies. Ladies and gentlemen, we are very delighted that the Ministry of Maritime is taking this lead for this premier event, of course supported by the Pakistan Navy. May I now take this opportunity of inviting our honorable guests of honor, who indeed will further talk about how the Pakistan Navy has this vision and what more can be done in collaboration. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Admiral M. Amjad Khan Niazi, Nishan-e-Imtiyaz Military, Sitare Basalat, Chief of Naval Staff, for his keynote address. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem.
Mr. Khwaja Asif, Minister for Defence Production, Mr. Faisal Sabzwari, Minister of Maritime Affairs, Mr. Sadar Treen, Minister for Defence Production, Mr. Zuhair Nasir from Badar Expo, Honorable Ambassadors, Excellencies, the military diplomats, Federal Secretaries, some experts on the blue economy, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Pakistan Navy, it is indeed my privilege to welcome you all on the soft launch ceremony of the maiden edition of Pakistan International Maritime Exhibition and Conference, in short PIMEC 2023. This premier edition, in short called PIMEC 2023, is being organized from 10 to 12 February 2023 at Karachi Expo Center under the patronage of Ministry of Maritime Affairs and co-organized by Pakistan Navy and Badar Expo Solutions Private Limited. Honorable Defence Minister, we are grateful to you for sparing your valuable time to grace this occasion as the chief guest. Your presence truly reflects your support to our efforts in organizing PIMEC 2023 and is indeed reassuring. Distinguished guests, since ages, oceans being the highways of international relations and economic prosperity are one of the greatest gifts of Allah subhanahu wa ta'ala to the mankind. As stated in the Holy Quran, and it is He who subjected the sea for you to eat from it, tender meat, and to extract from it ornaments which you wear. And you will see the ships plowing through it, and He subjected it that you may seek of His bounty, and perhaps you will be grateful. Ladies and gentlemen, increasing food and energy demands due to growing population and dwindling land resources is compelling nations to explore alternate means for sustenance and economic development. Since oceans promise both these opportunities with a vast reservoir of food, energy and wealth, blue economy is increasingly emerging as a new hope for tomorrow. Blue economy, being sustainable and multi-sectoral, encompasses a variety of economic activities linked to oceanic or blue resources while ensuring environmental sustainability. These range from exploration of sea-based natural resources such as fish, hydrocarbons and minerals, renewable energy, marine biotechnology, maritime industries, coastal tourism, and so on. Pakistan, as a bona fide coastal state, is blessed with enormous maritime potential that includes a coastal area of more than 1,000 kilometers, exclusive economic zone of 240,000 square kilometers, and extended continental shelf of 50,000 square kilometers. And this all at the crossroads of one of the busiest and globally vital sea trade routes. Pakistan's maritime sector has the potential and offers diverse opportunities in maritime trade and transshipment, port and harbors, extraction of hydrocarbons, sea-based minerals, value-added port logistics, shipbuilding, ship recycling, submarine cables, offshore installations, fish processing, and coastal tourism, etc., etc. Despite huge resource potential, with the exception of meeting national requirements of imports and exports, Pakistan has not accrued commensurate benefits of geostrategic advantage. For years, our country has primarily relied on land resources, and the development of maritime sector has remained peripheral. Of late, however, there has been conscious effort to pursue and capitalize on blue economy to prepare for foreseeable economic challenges. In this regard, CPEC project is a prolific addition to our potential of blue economy,
an opportunity for all which cannot be and should not be allowed to wither away. Initiation of multiple projects under the ambit of CPEC has rekindled interest of international players in the region and local business community, offering a great bonanza for economic activities, particularly in the maritime sector. Ladies and gentlemen, the objective of shared prosperity cannot be achieved without the collaborative efforts of all elements of national power. In the maritime domain, managing maritime resources and ensuring good order and peace at sea is invariably the prime consideration of any maritime nation. Development of maritime sector, therefore, is not only vital for economic growth, but also for shoring up our national security. Maritime economy can diversify the economic base and stimulate growth, while a strong and potent navy is vital for safeguarding strategic maritime interests. I am pleased to apprise you that Pakistan Navy is directing efforts to realize the concept of blue economy and create a conducive environment to accrue enormous benefits of ocean economy. At Naval Headquarters, we are committed to protecting our national maritime interests at all costs and divesting resources to address the entire spectrum of emerging threats and challenges. In order to exploit economical potential of seabed resources within our vast exclusive economic zone, Pakistan Navy is engaged in systematic mapping exploration of exclusive economic zone through China Geological Survey in collaboration with National Institute of Oceanography. In this regard, 3 joint expeditions for offshore hydrocarbon resources surveys of exclusive economic zone have already been undertaken. Preliminary results are highly encouraging, indicating presence of huge reservoirs of gas hydrates, which is crystalline methane, in Makran offshore region. The surveys have also identified major prospects of oil and gas reserves in the Indus Delta offshore region. Ladies and gentlemen, in this context, Pakistan Navy has been conducting Aman series of exercises since 2007. These exercises are organized biennially to demonstrate Pakistan's resolve to peace, reinforce regional maritime security, and enhance interoperability between regional and extra-regional navies. The exercise not only facilitates building partnerships amongst regional and extra-regional navies, but also in developing collaborative maritime security mechanism for making seas safer for positive human activities. Distinguished guests, PIMAC 2023 is being held concurrently with the 9th edition of Exercise Aman. It is aimed at bringing together national and international maritime stakeholders to showcase a wide range of products and services. The PIMAC exhibition would facilitate public-private partnerships seeking new avenues of cooperation and investments with the international maritime industry. Stakeholders from hydrocarbon industries, coastal development, shipping, port infrastructure, fisheries, marine tourism, offshore renewable energy, aquaculture, seabed mining, and marine services will exhibit their potential under one roof. In addition, it will also be a strategically important event in the region, congregating friendly navies to showcase their latest technological innovations in the maritime security sector. Indeed, this 3-day event will provide a perfect platform for B2B interactions, joint ventures, and cooperation amongst the participants, both from home and abroad. Besides, there will be a series of meetings, interactions, and discussions during various sessions of strategic conference on blue economy, about rich potentials of Pakistan maritime sector and expansive opportunities for its actualization. In addition, the discourse during conference will also facilitate policy formulation at the government level.
ladies and gentlemen, PIMEC will be the flagship event of Pakistan and is planned to be held every 2 years for demonstrating latest technology of national and international maritime industry. The exhibition will serve as one of the major international gatherings of entrepreneurs, R&D specialists, financial experts and top-level policymakers to enrich cooperation, share knowledge and support ventures in the maritime field. It will set the stage for global maritime industry to synergize businesses and join hands for a win-win economic cooperation. The innovation and excellence will pave the way for international collaboration amongst partners and friends. Distinguished guests, last but not least, we have the people and organizations who have been a catalyst and force multipliers behind this initiative. I would like to thank Ministry of Maritime Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Defense Production, and Armed Forces of Pakistan, and all the stakeholders from the maritime industry for their forthcoming support and cooperation in organizing this mega event. My special appreciation is also due to our event organizer, Badar Expo and Solutions, for leading this soft launch in a professional manner and fielding a competent team that is effectively marketing PIMEC 2023 globally. I am sure that with the same zeal and zest, meticulous planning and cooperation from all the stakeholders, PIMEC 2023 will prove to be a boon to our national economy and help attract international interest in maritime sector. I would once again express my gratitude to the Defence Minister and all our worthy guests for gracing today's soft launch ceremony. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us success in all our endeavors. I thank you all. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the emphasis on blue economy also allows us to look at our economy and the world economy in a new way. There are times when we feel that there are more roadblocks and hurdles to the ideal solution. But if you change the lens, just like in a camera, when you change the lens, you can focus and perhaps take a better picture. The same happens when you take a different look, a slightly different, zoomed out approach to economy. To quote the Trade and Commerce Minister of Seychelles, he said that blue economy allows countries like Seychelles to put oceans at the center of their finances. They are not a small island state, but we are a large ocean nation. And I think that kind of a perspective, when it comes to countries like Pakistan, it will truly allow us to harness the potential. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Senator Syed Faisal Ali Sabzwari Sahab, the Federal Minister for Maritime Affairs, who is now going to address this audience. Honorable Defence Minister Khwaja Asif Sahab, Mr. Asrar Tareen, Minister for Defence Production, Admiral Amjad Khan Niazi Sahab, Chief of Naval Staff, Excellencies, Senior Leadership of Armed Forces, Federal Bureaucracy, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. First of all, we are really honoured as Ministry of Maritime Affairs to be not only the patrons but the partners of Pakistan Navy in this great endeavour of PIMEC 2023, and we are really looking forward for a successful exhibition which will be held after every 2 years, and it will become a success model for Pakistan's maritime exposure, Pakistan maritime potential. A lot has been said as far as PIMEC is concerned. I would just like to add a few words. I'm really glad when I became Minister for Maritime Affairs that we have now a concept of blue economy here. Maritime Ministry as well as Pakistan Navy and every other department who can contribute is working towards the exploration and exploitation in the field of blue economy. Unfortunately, Pakistan has been shown in our presentation as well that our resources are immense,
but is still untapped. Like fisheries, we are exporting just a couple of $100 million every year to international nations. But while investing and focusing more and more on blue economy, we can take it up to the tune of $1 billion or more than $1 billion. What I'm looking towards PIMAC and the Badar Expo, I would certainly ask you and request you rather to bring all those who can invest in the fisheries things to PIMAC. As a Karachiite, I always felt that why we do not have marine tourism, coastal tourism. We do not have ferries. We do not have cruises. Can we have? It is certainly about time, if we are not late, that it needs to be explored. We have Badar, we have Pasni, we have, like, apart from the strategic areas, we have ports and coastal areas. We have the coastal town of Karachi as well as Balochistan. If we can bring our people towards the bounties of nature in shape of ocean, and we can expose all the Pakistani population to the benefits of the nature we are having, and they are still unexplored, it would be great. My only humble submission through this very, very short address is that we sincerely believe that economy and security go in hand. And that's why in our national security policy, it is emphasized in more than one area that Pakistan needs to be sovereign and our economy is needed to be focused. Only then a sovereign, a strong Pakistan can flourish on the global map. This is our idea, this is our focus. We will keep holding exhibitions and events like PIMAC for the future, for the benefit of Pakistan and Pakistani people. We can commit you here, all the audiences, our armed forces, that the political government is here for the betterment of Pakistan, no matter which political party is heading Pakistan. Economy, defense, national security, these are few areas which are above politics, which are beyond politics, and this is our determination, and this is our very much, this is our clarity towards all these subjects. So all the very best to the organizers of PIMAC, all the very best to all the officers, all the officials deeply invested into the organization of PIMAC. As a Ministry of Maritime Affairs, as I suggested earlier, we are there not as a patron, but as the partners. Thank you. Very well said, not as patrons but as partners. So there's something very unique about partnerships and the quality of leadership. As responsible and as demanding as it may be in terms of authenticity and integrity, there is a big component of being selfless. As they say, the Chinese proverb goes, the trees that you plant, you seldom sit in the shade of. But that is further inspiration to continue taking those steps. Let's see what tomorrow brings, but with the best of intentions, let's make our move today. As I was recently corrected by my business coach, we always assume that knowledge is power. It is not the knowledge, but application of knowledge that gives us the true power. Ladies and gentlemen, with this, may I now welcome our Honorable Chief Guest. We are very delighted and honored to have amongst us the Honorable Minister of Defense of Islamic Republic of Pakistan. Please join me in welcoming Khwaja Muhammad Asif Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mr. Faisal Sabzwari, Minister for Maritime Affairs, Federal Ministers, Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi, Chief of Naval Staff, Senior Leadership of Armed Forces, Mr. Zuhair Nasir, MD Badar Expo, entrepreneurs, distinguished guests, ladies and gentlemen. I forgot the name of my brother Israr Tareen, Minister for Defense Production. Assalamu alaikum. It is indeed heartening to note that
Pakistan Navy under the patronage of Ministry of Maritime Affairs and ably support of Badar Expo is organizing the first ever Pakistan International Maritime Exhibition and Conference. I am personally very pleased and extend my gratitude to Chief of Naval Staff for taking this strategic initiative. Distinguished guests, good governance, revitalizing national economy, poverty alleviation, combating extremism, and investment in human resource, education and healthcare are the key priorities of our government. I am therefore particularly pleased that with vibrant population of 200 million, growing consumer demand, improving governance as well as security, Pakistan today offers enormous opportunities for profitable investments, joint ventures, and trade in all sectors, particularly in maritime sector. Ladies and gentlemen, in today's world, with rapid advancements in maritime technologies and proliferation of related knowledge, maritime arena is assuming increasing importance in international relations. Indeed, today we need greater cooperation and collaboration at regional and extra-regional level. Since oceans are bringing the nations closer, the need to make them a safer place is also collective responsibility. Pakistan as a responsible state is committed to playing its role for international peace, stability and order, and this transcends to maritime domain as well. Reciprocity, mutual interests and international norms are the guiding principles that steer Pakistan's relations at the bilateral and multilateral fora. Regional cooperation and active engagements of maritime players has therefore become imperative to achieve peace, security and socio-economic development. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues but also to give chance to peace and harmony in our wider shared interests. At our end, Government of Pakistan, in collaboration with our partners and stakeholders, remains steadfast in its commitment to peace and prosperity for all. Distinguished guests, as is stated in the Holy Quran, the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala are hidden in the oceans, are there to be explored for socio-economic progress of mankind. Thus, development of blue economy remains one of the top priorities of this government. To accrue economic benefits from our maritime arena, we must be able to utilize our oceanic space for the development of new possibilities, especially in clean energy and food security. We must also develop capacity to explore and make use of our potential mineral wealth from the ocean floor. This can greatly assist in building sustainable trade that connects all markets, large and small, to create opportunities and benefits for masses. Ladies and gentlemen, Pakistan is blessed with a maritime potential that can contribute hugely to our national economy. Development of efficient shipbreaking industry, transshipment ports, fisheries industry, coastal tourism, water sports, and aquaculture are few of the areas which merit our attention. In order to achieve this, integration of public-private partnership amongst maritime industry is a must to achieve optimum levels. New ideas, entrepreneurship
and management skills mastered by the private sector are indispensable for success in all public sector industries, including defense. The potential of academic and R&D organizations must be incorporated for enhancing efficiency and productivity of our maritime sector. At the government level, we will continue to strive and create a business and investor-friendly environment for investments in human capital and professional development in this demand-driven industry. Distinguished guests, the idea to hold first PIMAC along with Exercise Aman 2023 is highly commendable. I foresee that the event will serve as a regional gateway for international manufacturers and suppliers for maritime technologies to explore new avenues of cooperation through joint ventures, outsourcing and collaboration. On the other hand, the event will also reinforce Pakistan's robust and deepening relations with the international fraternity. I would say PIMAC will become a shared vision for global peace, progress, harmony and good fortune for all its participants. The friendship generated through PIMAC will grow and bring Pakistan even closer to the cherished goals of realizing regional peace and prosperity through collaborative efforts. Distinguished guests, I once again congratulate and commend the efforts of Ministry of Maritime Affairs and personal interest of Chief of the Naval Staff and Badar Expo Solutions for taking this initiative to organize PIMAC and exhibit the best of Pakistan's maritime sector. I hope that this landmark event will promote international cooperation and progress many folds in years to come. My appreciation is also due to all the departments and organizations for contributing wholeheartedly to make this mega event a true success. I thank you all. Pakistan, Mindabad. Thank you. Thank you, Khwaja Saab, for your felicitations and, of course, your kind words. Ladies and gentlemen, this soft launch is, of course, a great potential, a platform where people can meet and greet. They can, of course, talk and explore the potential of this upcoming event. Towards my right, you will also see the layout of the floors. This is just suggested, but of course, this is, proof of the work, the homework, the spade work that has already been done. And there is much more that is to follow. Some very powerful themes and some very credible speakers from around the world will be participating in PIMAC. And now to formally, launch it and to formally get set, go with it and to run with the idea as they say it, maybe once again have the Honorable Chief Guest please come up to the stage, sir. And may I also request Admiral M. Amjad Khan Niazi Sahab, Nishane Imtiaz Military and Sitara Bisalat to please join him, along with, of course, the Honorable Ministers. Ladies and gentlemen, Khwaja Muhammad Asif Sahab, Defence Minister, our Chief Guest, Sayyid Faisal Ali Sabzwari Sahab, the Fiddle Minister for Maritime Affairs. May I also request Mr. Zuhair Nasir, the CEO of Badar Expo Solutions, to please join us up on stage. Our dear friends from media are also here. With the impression of his hand, we shall see that the PIMAC 2023 will be formally launched. Ladies and gentlemen, we also have the Honorable Minister for Defence Production, Mr. Israr Tareen Saab, here with us. And now, ladies and gentlemen, the Honorable Chief Guest is formally inaugurating PIMAC 2023.
future PIMAC 2023. May I also request the worthy gentleman to please stay on stage. Khwaja Sahab, we'd like to present you with a souvenir as a token of our appreciation and gratitude for being here. Ladies and gentlemen, may I request Honorable Admiral M. Amjad Khan Niazi, Nishan-e-Imtiaz Military Sitara Bisalat, Chief of Naval Staff, to please present this souvenir to the Honorable Chief Guest, Khwaja Muhammad Asif Sahab. May I also request other distinguished friends who already are aware to please join us up on stage for a group photograph. Ladies and gentlemen, this is a memorable photograph that formally marks the inauguration and the opening of PIMAC 2023. Our Honorable Chief Guest, Khwaja Muhammad Asif Sahab, the Defence Minister of Pakistan, Sayyid Faisal Ali Sabzwari Sahab, the Federal Minister for Maritime Affairs, Israr Tareen Sahab, the Minister for Defence Production, Admiral M. Amjad Khan Niazi, Nishan-e-Imtiaz Military, Sitara Basalat, Chief of Naval Staff, Zuhair Nasir Sahab, the CEO of Badar Expo Solutions. And distinguished gentlemen representing various important departments who are all collaborating for this upcoming event. May I once again request our worthy participants to kindly stay seated. Truly an event of substance and vision, PIMAC 2023 is formally launched today. We are keenly looking forward to February 2023 in Karachi to welcome our worthy speakers and all of you participating to be a part of this premier event. Once again, ladies and gentlemen, an initiative of the Ministry of Maritime Affairs in partnership and support of Pakistan Navy, being executed by the Badar Expo Solutions. With this, ladies and gentlemen, may I request the worthy gentlemen to move to the refreshments and high tea area. All the worthy participants here are also requested to stay in the hall, and tea is being served in the adjoining hall behind you. So if you look at the doors that are open towards your back, they are leading to the high tea area. With this, ladies and gentlemen, the inauguration ceremony comes to a formal close. Thank you very much for your participation and your attendance. अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस और एसएसयू की जानिब से एक्सट्रीम गन शूटिंग कंपटीशन अरेंज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा कि इंटरनेशनल मयार का ये प्रोफेशनल शूटिंग कंपटीशन अरेंज किया जा रहा है, जिसमें तमाम यूनिफॉर्म फोर्सेस के लोगों को हमने इनविटेशन भेजी है, वो आए और अपनी शूटिंग स्किल्स को आजमाएँ। इसमें हमने न सिर्फ ये कि यूनिफॉर्म पर्सन को इनवाइट किया है, बल्कि सिविलियन कैटेगरी भी रखी है और वुमेन की भी कैटेगरी रखी है। इसमें जिनके भी पास अपनी हैंड गन्स है वो इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। उसकी कुछ शराइत हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। तो मैं तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ कि इस इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लें और अपनी महारत को साबित करें। और इसमें हमने कुछ प्राइसेस रखे हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स रखे हैं जो कि लोगों के लिए इंकरेजमेंट का बायस बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू आप लोगों के लिए ला रहा है फर्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि 9 सितंबर को एसएसयू हेडक्वार्टर चौकंडी में खेला जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म एसएसयू की वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 सितंबर है। इस शूटिंग कंपटीशन में शिरकत के लिए ज़रूरी है कि शूटर के पास जो फायर आर्म है वो लाइसेंस्ड हो, उसके पास उसके सेफ्टी गैजेट्स कंप्लीट हों, आई प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन। शूटिंग गैजेट्स में ज़रूरी है हैंडगन, हैंड होस्टर, 3 मैगजीन और मैगजीन पाउचेस। इस शूटिंग कंपटीशन में 6 डायनामिक स्टेजेस खेले जाएंगे, जिनमें 150 राउंड फायर किया जाएगा। ये एक रोज़ा शूटिंग कंपटीशन होगा। इसमें 3 के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, सिविलियन एंड फीमेल कैटेगरी। जितने भी यूनिफॉर्म पर्सन होंगे वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट कैटेगरी में खेलेंगे,
जितने भी सिविलियन मेल पर्सन होंगे वो तमाम सिविलियन कैटेगरी में खेलेंगे, और ख़वातीन चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट से हों या सिविल हों वो फीमेल कैटेगरी में हिस्सा लेंगी। ये कंपटीशन ओनली 9mm पिस्टल कंपटीशन होगा और ये IPSC और USAPSA के रूल्स के तहत खेला जाएगा। इस मैच में इस्तेमाल होने वाला टारगेट USAPSA का स्टैंडर्ड टारगेट है, जिसके 3 जोन हैं, अल्फा, चार्ली एंड डेल्टा। तीनों कैटेगरी के विनर्स को कैश प्राइज, मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। It's 3 p.m. अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस और SSU की जानिब से एक्सट्रीम गन शूटिंग कंपटीशन अरेंज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा कि इंटरनेशनल मयार का ये प्रोफेशनल शूटिंग कंपटीशन अरेंज किया जा रहा है, जिसमें तमाम यूनिफॉर्म फोर्सेस के लोगों को हमने इनविटेशन भेजी है, वो आए और अपनी शूटिंग स्किल्स को आजमाएं। इसमें हमने न सिर्फ ये कि यूनिफॉर्म पर्सन को इनवाइट किया है, बल्कि सिविलियन कैटेगरी भी रखी है और वुमेन की भी कैटेगरी रखी है। इसमें जिनके भी पास अपनी हैंड गन्स है वो इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। उसकी कुछ शराइत हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। तो मैं तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ कि इस इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लें और अपनी महारत को साबित करें। और इसमें हमने कुछ प्राइसेस रखे हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स रखे हैं जो कि लोगों के लिए इंकरेजमेंट का बायस बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU आप लोगों के लिए ला रहा है फर्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंड गन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि 9 सितंबर को SSU हेडक्वार्टर चौकंडी में खेला जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म SSU की वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 सितंबर है। इस शूटिंग कंपटीशन में शिरकत के लिए ज़रूरी है कि शूटर के पास जो फायर आर्म है वो लाइसेंस्ड हो, उसके पास उसके सेफ्टी गैजेट्स कंप्लीट हों, आई प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन। शूटिंग गैजेट्स में ज़रूरी है हैंडगन, हैंड होस्टर, 3 मैगजीन और मैगजीन पाउचेस। इस शूटिंग कंपटीशन में 6 डायनामिक स्टेजेस खेले जाएंगे, जिनमें 150 राउंड फायर किया जाएगा। ये एक रोज़ा शूटिंग कंपटीशन होगा। इसमें 3 के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, सिविलियन एंड फीमेल कैटेगरी। जितने भी यूनिफॉर्म पर्सन होंगे वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट कैटेगरी में खेलेंगे, जितने भी सिविलियन मेल पर्सन होंगे वो तमाम सिविलियन कैटेगरी में खेलेंगे, और ख़वातीन चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट से हों या सिविल हों वो फीमेल कैटेगरी में हिस्सा लेंगी। ये कंपटीशन ओनली 9mm पिस्टल कंपटीशन होगा और ये IPSC और USAPSA के रूल्स के तहत खेला जाएगा। इस मैच में इस्तेमाल होने वाला टारगेट USAPSA का स्टैंडर्ड टारगेट है, जिसके 3 जोन हैं, अल्फा, चार्ली एंड डेल्टा। तीनों कैटेगरी के विनर्स को कैश प्राइज, मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। The joint venture of Badar Expo Solutions and Dairy Agriculture Livestock Farmers Association, that is DELFA, is being held in collaboration with the Sindh Board of Investment. And the main objective of DELFA is to enhance the knowledge of farmers and skills by adopting modern techniques for value addition, which in turn would contribute to the national GDP. Ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Ahmed Faisal, Senior Vice President DELFA, for his welcome address. Please give him a huge round of applause. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim.
तमाम डिस्टिंग्विश गेस्ट नूर अहमद साहब, नसीम साहब वाइस चांसलर और नदीम साहब, मैं इन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ पे आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे वैल्यू एडिशन के हवाले से जो काम हो रहा है डेयरी इंडस्ट्री में, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नूर अहमद साहब जो है हमारे स्टेट बैंक के डायरेक्टर्स हैं, तो इस सिलसिले में वो अपने तासुरात भी देंगे। थैंक यू सो मच। This seminar will focus on milk value addition, technology advancement in milk processing and packaging, farm management, animal health and nutrition, awareness on government policies, networking opportunities between